गुड मॉर्निंग जी। आपका फ्राइडे इंतज़ार करते रहे, आप आए नहीं। वो आप उधर बैठे थे फ्राइडे को। नहीं, दिवाली वाले दिन। हाँ सॉरी दिवाली वाले दिन। सर आपने आप क्या होते हैं? नहीं वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। उनको दिला दिया आपने फ्राइडे को मैंने। नहीं फ्राइडे को तो एक ही ट्रेड हो पाया। Friday was not a. Do you understand South Asia, like, or? I understand like 60%. Okay, no but I problem. can't speak. No, don't worry. No. So I'll make sure I'm in English. Like, इसका 10,000 डॉलर दे दीजिए, मुझे 4 डालने हैं। यार मेरे कंप्यूटर ऑन नहीं होता अभी खरीदा। no, bro. तो पावर का मसला ना हो। पता नहीं, तो ये तो पावर में अभी डाल दिया तो फिर ऑन ही नहीं। मैं देखता हूँ। Okay. Where were you going today? Nothing. Just Ninja Trader. just open Ninja Trader and observe. I will get to you guys. The simulator of life making money. No, simulator. You guys are not ready to make money for at least 3 weeks minimum. I have to teach a lot of things, how to read it. So, and I'll do my introduction. The 9:45, 10 o'clock, I will get you going. No, We don't. stay in this class I'm here till 2 o'clock. like for us to stay. Yeah, It's good to stay till. you can stay till 4 p.m. No problem. I mean, what do you suggest? Like we stay. No, until at least 2. Like if you have the time, you can. The more you will sit, the more you'll learn, right? So, no worries. All right, all right, let me do my morning daily personal brief and then I will get to you guys. All right, good morning everybody. Monday, November 4th, 8:54 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Wherever you guys are joining us at superareas.com. Live stream is on, Zoom is on, and let's see where the market is. Okay. And give me a second. So today is November the 4th. Areas are updated. The strike price is 20355 for Nasdaq. What are we looking for? Lower and highs. Let's see. Base is down. Pressure is down. No problem. Google Sheet I have gotten updated already with the latest areas, so that's done for Nasdaq. The night session high we have 250, 20,250 approximately. Low has been 20,070. So the gap has been 180 points. Right now the price is 151. Right, very close to S1. So let's see. So your S2 is your night session low, and that's it. So ES night session is 57.55.
And high, what was the high? 57.76. So same approximately R1 and S1, night session highs and lows. And so both of you guys, आपका तो मसला है, open up Ninja Trader and click simulation and just watch for now. Let me just check if Zoom audio is good. Zoom and live audio should be okay. No, you don't need to because you're in person. You don't have to. It's only for users who are worldwide listening us online. It's plus that is delayed anyway. That's a audio video is 20 seconds delayed. So Zoom is a little bit faster. So Zoom link is up, and let's see. And so I'm waiting for at least 120 or lower than that night session before I think of any long position. Any news and earnings? Let's look at news and earnings. News is tomorrow. So earnings, nothing major. All the rally is finished. Now we will worry in January with all the craziness. Tomorrow is important. ISM red and a Congress election. Wow. And November 7th, 2 p.m. is the tornado. Federal interest rate, right? So at 2 p.m., if anybody on Apex wants to hedge, that's a good opportunity. No, sir. November 7th. 7 November at 2 p.m. is your morning is unemployment claims and evening is your FOMC. So step 1, check the news. That's the first step. And step 2, base and range of the day, which we give you. And while this is starting, let me give you my intro. I'll give you my number. So 647-228-0694 is a WhatsApp number that's read by 4 people. So support and myself in the evening. If you have an issue, anything like that, you can't get a hold of Daniel. I'm next in line. He teaches Saturday and Sunday the theory. Monday to Friday, I kind of lead you into explaining everything, right? So how things are, why are you here, what are you trading? How much money can you make? How much money is at risk? All of those things, that's what I do. So Monday to Friday, 9:30 to 11 generally, there is no teaching. I can't answer your questions. I can't, because what happens is this is the prime money making time where you will enter a trade, mid-band, buying, selling. This is the biggest. After 11, it slows down. From 11 to 2, I will answer your question, hey, what is this? But around 11 o'clock, I teach. Teach as in, hey, this is higher high, lowers lows, mid bands. So anything you have, because I was a student once here too. So by the time you come Monday, everything you have done on Saturday has forgotten, right? You're like, so it's a lot of, both of you have traded before? You have? Some, okay, so. No problem. It doesn't matter, new, old, expert, known. I will lead you by holding your finger. But there are certain things I want you to follow. Today, when you go home, log on to superareas.com and watch a video called How to Get Started with Ninja Trader. So if you log in, there's a green button that says Course Training Videos. And at the bottom, it says Setup Guide for Ninja Trader.
because this platform you're gonna get used to it for the rest of your life, how to do buy, how to do sell, and all of those things, right? So that video is 2 hours long. Highly recommended. There you go. 135. Which way will it go? अभी आपका एरिया है, हाँ 120 है, तो वहाँ तक वेट करूँगा मैं. 250 से आ रहा है, सो इसको बाउंस मिलना चाहिए 150 से. So it's testing night session low right now. So your S1 is about to be done very soon. We're only 10, 14 points away. But let's see. Sorry, which video was it? If you go, go down into the green, and at the bottom it says Setup Guide Ninja Trader Starting, like 8.1. It's a YouTube video, right in the, you see video 1, 2, 3, 4, 5, 6, then there's an ATM video, then there is that video on how to get started with Ninja Trader. So that would be your starting point from today, meaning that you should at least watch this video. That'll explain how to buy, how to sell, how to put a stop loss, how to do all of those things, right? So, but around 11 I will start our official as well. The video says how to use ATMs. No, one below. Beginner's Guide to Ninja Trader. There's nothing. So 128 guys. सर 120 का वेट कर रहा हूँ मैं. क्योंकि 120 आपका S1 है, and it's coming from 250, so it should give us few points. This is not good. There you go, almost at S1. I'll be right back. Good morning.
I need to share the computer. So sorry, guys. I can go from under here. No way, no way. Computer is down. Thank you. Yeah. All right, we are. Two. Two. All right, we are almost in that area for Nasdaq. जी जी about 5 days, 4 to 5 days, generally business days. ये जो सिमुलेटर है ये भी लाइव मार्केट में ये ट्रू डेटा लाइव है आपका, जस्ट आपका अकाउंट रियल नहीं है. अभी जो हमारे सामने खुला है ये कौन सा मार्केट खुला हुआ है? ये मैं सब एक्सप्लेन करूँगा, एवरीथिंग. मैंने ऑर्डर प्लेस किया वाली दुकान पे. सर ये रिदमिक में एरर मैसेज दिखा रहा है, डिस्कनेक्ट इन्फोर्स्ड बाय ब्रोकर. सेकंड No, no, if you open Ninja, Rhythmic will disconnect. If you open Rhythmic, Ninja will disconnect. एफटीटी का तो रिदमिक से होगा ना, Yeah, FTT का सिर्फ Rhythmic में. तो इज इट ओके? Yeah, it should be no problem. One connection FTT, but you don't have it on the phone or anything, right? No. Okay, should be fine. Should be. All right, we're definitely in the zone now.
115. Is he gonna stop here or what? Because 100 is the next number. Good morning, Ji. Good morning, Rafael. Good morning, Ji. किया क्या डाउन की आज नहीं अभी वहीं खड़े हैं. We're in Nasdaq S1 and very close to ES S1 as well. What are we up to? It's coming from R1 overnight session, but and the S1 is the price of 100 to 120, and we are inside the S1. Let's see how many points it can give me. So far, we're positive 5 points. बाय ले लिए Buy लिए. क्योंकि बहुत ऊपर से आ रही ना. So let's see which way it wants to go. We're up. There you go. We are up some points. If anybody took that area, they're done. Not sure if anybody took the area. Lillian? S1 is done. ठीक है? आपने 10 पॉइंट लिए? ठीक है. S1 is done. हाँ मेरे ख्याल हो 10. 10. Brand new. I will handle. No problem. So S1 is officially done on Nasdaq, not really done on your ES. Goes and test one more time. Let's see. जी S1 is 5760 to 5757. yeah so S1 ES की अब हो रही है. टच कर गया ना. टेस्ट हो गया लेकिन आपका Nasdaq की डन हो चुका है. It's touched 120 and went back up. It's testing it second time.
Yes, of course. Like, first day here? First day? Yeah, sit anywhere. No problem. Welcome. Fifty-three. So almost below S1 for ES and almost very close to base is down, pressure is down. So we now wait for S2. 50, which is almost night session low. Is there any earnings today? No, nothing. All the craziness is finished. Tesla, Microsoft, 7 days of craziness. एक दिन टेस्ला ले गए, ऊपर ही ले गए, और फिर माइक्रोसॉफ्ट मेटा ले गए. चलता रहेगा. Hi. Smaller than reversal. All right. Tomorrow we have U.S. election. Tomorrow 100% stay in short, please. 100%. Doesn't matter, base up, pressure up, stay in short tomorrow. कल डाउन ही रहेगा. हाँ, कल काम जो है ना, जब ट्रम्प जीत जाएगा ना फिर आप ही देखना. फिर बाय ही बस. नहीं वो नहीं जीतने देंगे, नहीं जीतने देंगे. बहुत मुश्किल. 60-50. There you go. We're down to 100 now, guys. Market is about to go towards night session low, S2. Be ready. That's how fast things go. Very close to night session low now. Going to S2. Yeah, S2. S2 is your night session low. मैंने भाई जहाँ से गिरने का. नहीं गिरने दें अभी, पूरे आने दें, 70 तक तो आने दें, 70-50. ये इलेक्शन के टक्कर में गिरने के. पचास निकल जाओ. S2.
All right, he's gonna start speaking soon, so I'm gonna turn off the mics. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal. Hello, guys. Game show. Microphone check if you can hear me, guys. Walaikum salam. Good morning, Arun. Jain ji. Good morning, ji. Walaikum salam. Good morning. Taimur bhai. Mahip. Good morning. Clifford ji. Good morning, Ranjan ji. Joy sahab, good morning. Sayyid Ali ji. Manpreet ji, good morning. Amer bhai. Shinder ji, good morning. Inder, good morning. Majid. Ranjit ji, good morning. Murli ji, good morning. Jagdeep ji, good morning. Sanjay. Ashwin ji, good morning. Hussain, Sunil ji, good morning. Amrit, everybody, good morning. Ji, good morning, Ji. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our trading floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your decision, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday. You'll make it today. Always be on your toes. Always place your stops and always ready to accept those losses and do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you trade. And guys, all the areas on superareas.com or on even you are seeing in GoToMeeting are not buy and sell areas or any type of financial advice. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, our S&P 500, our high. First, let me tell you, once in everybody's lifetime, this week will be the craziest week in our lifetime. Tomorrow, especially, a very, very weird day. One way down, we'll see market one way down, and next day we'll see push to the upside. This is a typical pattern forever, but in our lifetime, this week is a very critical week. Tomorrow, elections, and then we have 15 big companies' earnings are coming this week. 15 big company earnings are coming, and then we have November 7th, very, very important day. First, we'll get the interest rate, like what they will do about the interest rate, and then 2:30 p.m. Remember, 2:30 p.m. will decide your market to go up or go down. Definitely, they will cut the interest rate on 2 o'clock. 2 o'clock, they will cut the interest rate, and 2:30 we'll see what Powell is saying. In future, they are cutting. I believe they will cut more in future, the interest rate news. So today, the interest rate they will cut. Today, we have factory orders at 10 o'clock. Tomorrow, trade balance, ISM, PMI. This is election day. Remember, tomorrow is a very, very crazy day, one way down. And next 6th we'll see price almost cover up 90%, 90, almost more, not 90, more than 110%. They will cover up whatever drop we'll have on our 5th, and then 7th. Everybody know we have interest rate news is coming, and then our speech, not speech, he will give the future policy. Friday will be a normal day. University of Michigan consumer sentiment is coming. Inflation data is coming. Everybody know if it's high, market will go down. Low, market will go up. So S&P 500, 50 at 10 to 18 is high today. Already hit our S1. Everybody who was short, they get out that 50 area. And we knew that 50 is green box, low of the green box. 99.9% chances was green box will push market to the upside. So we don't care. We are not worried about if you're short anywhere from below BP 63, get out at 50 area. You're done for the week. 13 points, more than enough. Nasdaq is still pushing down. Base is down. Pressure is down. So low for S&P is 19 to 57.19 to 57.10. Our Nasdaq 2420
420, 420 to 460 is high. Nasdaq 9980 to 940 is low. Expected is our expected low. Just matter of time. We'll see if price is breaking our 70 area, and that 70 area will decide your price to go down. Why? Because that is our Sunday low. When market open with the gap, creates a low and right away fill up that gap. We know like 100% the gap will be filled, and it fill up the gap to the upside. So right now our S1 on Nasdaq price hold by S1 and bouncing back up. Same thing, it just like a bullet. If you see Dow, like a bullet bounce back up from our S1 area. 100%. Russell 2000 very close to our S1 and shoot to the upside. Very nice, beautiful bounce back from S1 area. British pound just shy in between green midband and R1 area, just doing nothing, but it creates a diversion to the downside. So we had a diversion nighttime. It creates a diversion and just hold by R1 area right now. Canadian dollar is pushing up. You see it breaks our Sunday high from green midband. R1 area went up, and right now just two-third close to our R2 area. So Canadian dollar R2 area. Euro is up. Euro breaks our Sunday high, break our Friday high, and actually break the Friday high. And Sunday it tested our high of Friday and break the high. Crude oil is up. Crude oil above R1, very close to R2, two-third from R2 area. Right now it's retracing back down of $2.49. 49 cents. Crude oil opened with the gap and did not fill up the gap. It means in future we'll see the filling up of the gap. Gap should be filled up. Gold pressure is down, base is down. You see, we see a fake push to the upside and just shoot to the downside from 57 area, midband magenta. We had a Friday, it came down to our expected low for the day, and it's 100% hit our expected low, 39.40 cents, and bounced back up $14 from the low. If anybody who go long on Friday and had the holding, made very nice, beautiful push, and then it retraced back down. And tonight, I'm talking about tonight, it came down $13, 91%, $13.30, and pushed $16.80 and gave us a higher high. And right now, it's pushing down, and it's a very nice push to the downside just right now. Natural gas is up. Natural gas very strong, pushing up, and add our magenta midband and expected high for the day. So natural gas, our expected high for the day is done. Guys, remember now, as soon as we are hitting a cold weather, natural gas will go up. Definitely a very typical pattern for a natural gas to go up. Right now, again, guys, base is down, pressure is down, staying short. Tomorrow, today, just even hit and run and get out and just call for the day. Myself, if I made good money today, I'm telling you, I promise you, I'll take off whole week. I will enjoy, and next week I'll come back and I'll see what's going on. I will keep what I made. That is a trader behavior, right? So I will keep what I made, hit and run at any area, but stay in down till tomorrow evening. Please guys take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here, G. So while we were You're sitting, welcome. S2 is done. Rizwan bhai, good morning. Nazim, good morning. S2 is Walaikum salam, walaikum salam. Now we wait for Everybody. expected. You're welcome, G. Everybody, you're welcome, G. Take care. Hani. Let's see. S2 is done. My colleague gives me your. Yeah, your demo is expired. So go on ninjatrader.com and make another demo. Okay. Yeah, that will work. Okay, your demo is expired.
इसकी टच कर लिए Yes, yes. अभी 300-400 के बाद देंगे लगता या नहीं ऑलमोस्ट ऊपर से 250 से आ रहे हैं. जाएगी ऊपर अब वो थोड़ा रिकवर करेगी. Let's see. Yes. Hi. This is Ken. I didn't catch your name. Rafi, I like it. Okay. No, this is not how you start. You gotta do not the live trading. You gotta do the simulation at the bottom. Do this. Yeah. Let's see. All right. S2 is done. Now we wait for the next number. ES is 38. ES has gone to almost S2 is ES is done as well. S2. You think today we're going to get big swings? No, not that crazy. No. Done हो गया. तीन सौ हो गया बस. Good, good. अभी वेट करते हैं गिरने की. S2 से लिया किसी ने? ले लिया, ठीक है. ठीक ठीक. So do you think like जी साहब मुझे बुला लें वो चीज़. No, you're done. That's it. You already have Ninja, right? Just log into it. So just log with that username password. You already have Ninja, right? Yeah. Where is it? It's in Chrome. Did you install it? Yes. Okay. This is the Ninja. No. I mean, did you install the program? I'm not sure. Okay, today's your first day? Yes. Okay. Didn't? Can you go see Daniel? Yeah, sure. Yeah. Just go see him because he's supposed to have. There you go, guys. What a big push-up. Crazy push-up. 51 points. This is amazing, man. It went from 14 to like, so it's crazy right now. sort of C trader कितना? C trader? C trader, वो मेटा से थोड़ा बेटर है, मैं वो यूज कर रहा हूँ. वही करना है वो. हाँ, क्योंकि वो पेड में है, फ्री में नहीं है. अच्छा वो पेड कितना है उसका? नहीं, आप कोई भी प्रोग्राम ले लोगे ना तो फिर लग जाएगा.
जैसे ये का अकाउंट तो चल ही रहा है, उस पे तो लग जाएगा। यस यस, नहीं नहीं नहीं, अगर आपने मेटा पे साइन अप किया ना तो मेटा पे होगा। अच्छा मेटा पे जो हाँ, हाँ। अपना नया अकाउंट लेना पड़ेगा। यस यस यस, अब नया उस पे लिया आपने? मैंने सी ट्रेडर पे लिया सी ट्रेडर चेक कर लेते हैं। क्योंकि उसमें मुझे पसंद आया नाइट्रो की तरह ना। वही बोल रहे हैं ना, वो सी ट्रेडर बेस्ट है। Alright, let's see. So that was 54 points shot up. या तो हाई चली जाए, सेल लगा के सो जाएगी। What's the number right now? We are at near S2. So S2, somebody made money. That's good. So I'm going to mark S2 done. What's the lowest it went to? 13. So even the lowest section is done. So 20,013, and we started up 20,114. Open 138. So 126 point swings, incredible. So if you stick to area, no problem. S1 gave you a little bit, S2 gave you a little bit. Now we will wait for R1. 250 is for Nasdaq. So anybody, so far I've taken 3 trades. That's it, nothing else. And it's shooting up like crazy. 10 o'clock, now it says medium impact or forex factory. So factory orders 10 o'clock, low impact, low impact. So not too crazy. Or a full swing back up. What a crazy. यहाँ सेल बनता है। नहीं मैं यार सेल ऊपर से करूँगा 250 से 250 से सेल करूँगा या 200 के ऊपर से. with the loss of Majority should be done. Everybody should be done their trading by now. Because if you have taken S2, this is back up to S1. बड़ी लंबी स्विंग ले जाएगी। Oh yeah. And still going up. अभी नीचे अब थोड़ा सा और. आ जाएगा। पानी की तरह आएगी। Let's see if any stocks are up. गैसोलीन आप है, नेचुरल गैस आप है। सारा डाउन ही है। दसला डाउन, बहुत डाउन आ गया। There you go. Still climbing. कितने लेके जाएंगे ऊपर से? जाने दें. माइक्रोसॉफ्ट भी डाउन है। Still climbing.
Let's see if it goes down. All right, now we sit and wait to see if it's gonna go above our S1 or it doesn't make it a base resistance. So let's see if it goes to 250. 250 I'm waiting for to sell. Not going to enter before 250. Any problem? Oh, power, battery. I'll tell you everything. Don't worry. Day one, don't worry. अभी आप आज इस यूनिवर्स में पैदा हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी चलानी है। हाँ, सब बताएं। आपसे ऑब्जर्व करें मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ हाँ, beautiful trade. I had shorted from 130 by the way. Yeah, because R1, it was the base, came from S2, I mean S1 top, and I shorted for 10 points and I got my money. 12 कर लिया पूरा। इतना गुस्सा था, 12 पूरा कर दिया। 440 कर दिए और फिर 8 देंगे 9 देंगे। आज यही गलती हुई। I was picking 10 micro and I put 10 mini. Man, just 1 second I was like minus 1100. What happened here? So, it's okay. बड़े से खेल रहा हूँ। 50 से सर। नहीं आप हो गया ना टारगेट। फिर आप चलते नहीं 10 कहते। हाई एंड लो डिवाइडेड बाय 2। हाँ नहीं रात का निकालेंगे ना, नाइट सेशन का पीरियड। ये देखिए यस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन जनरली मैं आसान तरीका बता, एरियाज है ना,
R1 R2 के दरमियान वो जो लाइन जा रही है वो मेरा पिवट पॉइंट बन जाता है. So much easier to look at. All right, so let's see if it goes towards 250. That would be the next zone, and if you hold your fingers you will make money. Just आपने अभी तक 2 ट्रेड किए पॉजिटिव 100%. ठीक है, एक S1 से एक S2 से, अब R1 से. That's it. R1 पे बेशक आप 5 माइक्रो छोड़ दीजिएगा, बन जाएंगे पैसे. Nasdaq ES में तो मिड बैंड है या एरिया है. Let me, yeah, S1 gave us very little points, maybe 15 points, but S2 gave us quite a few points. It's okay. Look, yeah, you were up 30. Yeah, at least you did it on the training. That's good. Like today, market is moving the way it's supposed to move, without any fanatics, without any craziness. So now sit back, take. So my trade, if I am up, my FTMO I'm up, my FTT I still can't log in. Their CEO resigned, so I don't know if it's FTT. Their CEO, no, not Scott. What's his name? Sage. Sage resigned and they hired a new one because Sage said that people just stole $10 million from the company before, and Scott doesn't want to give the power. So still company is alive, but so मुझे लगता है नहीं आ जाएगा. मैं बैठा हूँ. हर महीने बाद आके अपोलोजाइज कर. Sorry? Always be ready with power, electricity, internet, because the futures market you could be heading any point, anytime. सब ठीक है. मिल जाएगा. छोटे पे आउट सारों को मिल रहे हैं. मेरे काफी ग्रुप को 1500 से 3000 का पे आउट मिल रहा है. 24 से ऊपर 15 से ऊपर वाला मसला है. Since I'm done my trading, might as well explain to these people. All right, let me test this. I think I'm going to call it a day before I start giving money back to them. 11 बन गया. नहीं 14. प्रीमियम में हाँ पूरा हो गया. मैंने फिर 100 लॉट से बैंक रहा हूँ. बनना ही आते हैं. अब नहीं जब आपको गुस्सा है एरिया से बड़े फेंक दो. अब कब लिया? फ्राइडे को लिया. हाँ
देखिए मैं सी ट्रेडर वाला लिया। ओह सर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए। क्या ये तो अभी चेंज नहीं होगा? नहीं ये नहीं चेंज होगा। रिक्वेस्ट डाल के देख लो। नहीं सो ये है नाइट्रो की तरह। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये कनेक्ट हो रहा है तो ये कितनी ले रहा हूँ? हैं? उतनी नहीं छोड़ा, अभी आपके सामने 10 लेता हूँ, ठीक है। ये सेल कर दिया ना, ये सेल 10 हो गया। अब वो देखें, यहीं से उठा के अपना स्टॉप लॉस उठा लो, इतना आसान हो गया। नाइट्रो वाला काम है। ये भी ऐसे ही है, एफटीएमओ में भी यही है। लेकिन मुझे एफटीएमओ से ना तो उसमें भी लाइन है ना, जहाँ ट्रेड लगी हाँ। वो लाइन ही उठा दो। ये तो वहाँ पॉइंट है हाँ ना, हाँ। उसमें सीधा ही है। अच्छा ये देखें ना, अभी वो बना हुआ है 10 के साथ, तो ऐसे लगी हुई हाँ। है नीचे की तरफ। इसमें ऐसे है, इसमें भी ऐसे ये लाइन है ना, हाँ हाँ। ये लग गया ऊपर। ओके, ये भी ओके। लाइन से ही है नीचे। मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। नहीं ये भी अच्छा है, ये ट्रेड सीधा लग रही है, ये भी सही है। ये मैंने ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, इसी को टच करके यहीं से कट जाएगा, यही सही है। नहीं गुड। मुझे मेटा नहीं पसंद आया। नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अब नहीं। All right, 1/3 time it's testing the S1 as your resistance coming from the bottom. Let's see if it breaks it. If it breaks 250, if it doesn't break, expected low. That's it. Only two numbers for Nasdaq left, your expected low or R1. Okay, now I'm done training myself. I will now teach you guys what to do next. Okay. Those listening online or in person, I've said that maybe a couple hundred times, but because it's first time for you, I'll go in absolute beginning. So your Ninja Trader, when you guys signed up, only works demo for 2 weeks. After 2 weeks, when you load it up, it will say your data is expired, which is okay, no problem. Go to ninjatrader.com, open up a new email, do the process again, start again. So every 2 weeks until you guys are ready, you're gonna have to do this over and over and over again. So just so. And once you're in the live environment, then this headache goes away. Because your demo, we want to make sure you keep learning the demo first. So you didn't even have Ninja, so he installed it for you. So you signed up, a demo account is good for 2 weeks, right? There you go, it shot up, wow. Back up to, so maybe it's gonna break, maybe not, I don't know. I'll sell 10 more. It's just free money on the market. My total is 1,700 times 10, 17 grand on Tradeify, and I'm up $12,000 on FTMO. Okay, so you'll get me, see me get excited because there's a point where you have to enter, right? So I'll run to the, all right. Let me grab a glass of water and then I'll explain exactly what you're looking at, what you have to do, what you don't have to do, all of those things. See, in a normal day when there's no earnings stress, things are normal, they will go smoothly. Not like 400 point idhar, 400 point idhar, right? So tries to test that S1 again as a resistance over and over and over again. If it breaks that 200, then we will 250 सर, 250 से पहले अपना फिंगर दूर रखें माउस से, Nasdaq के लिए. ES mid-band worked beautiful. 149, 151.
water, and then I'll be right back. सैली चल रही है ना गोल्ड में, सैली चल रही है। ट्रेड मुझे भी नया इशू सेल तो मार्केट में हम सेल लगी हुई है। नहीं सेल टेस्ट में ट्रेड ले लिया, एफडी में ले लिया। अगले हफ्ते आप डेंजर नीचे को जाना होगा दूरी अभी तो साल कल वेट कर लो ना, एक हफ्ता वेट करना चाहिए। देखो वीक से बनना है सेल, कल सेल या कल बनना है हाई टू सेल आएगी तो बन जाएगी। थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रम्प बन गया तो उससे भी ज्यादा लेना ट्रम्प बन गया तो कल ही ना उसमें कल ही 10 दिन नहीं है जगह जे है वो जे जो करना है जो इंक्वायरी होती है वो तो कभी ये If I did my iPhone, Yes, yes. but इसमें नहीं शो कर थोड़ा सा गोल्ड भी जोड़ आ जाएगा। ये गोल्डन बुक बड़ी मुश्किल है आ गया 200 घंटे लॉगिन करें जीएफ सारे कर रहे हैं। जीएफएफ लोन करते हैं तो एमबी में हाँ, पैसे अब ज़्यादा भैया यार एमबी में होगा तो हाँ नहीं एफटीटी के अंदर $3.81 की वेबसाइट $1.27 भैया बार बार सही है। इसमें लॉगिन एफटीटी का तो यूजर आईडी पासवर्ड ही different है। जीएफएफ हमने पहला अकाउंट बनाया दूसरा ठीक है लेकिन लॉगिन करें तो आपको यूजर नेम एफटीटी पासवर्ड मिलेगा, इसकी वेबसाइट से जो लिखा हुआ है वो आपने डालना है रिदमिक में। आप क्या करें बार बार एपेक्स में लॉगिन करें तो वो निंजा डिस्कनेक्ट हो जाता है। पहले भी तो सही लिखा नहीं 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 पहले आप एपेक्स का इनको थोड़ा सा बताएंगे सिर्फ उनकी एफटीटी की वेबसाइट से रिदमिक का यूजर नेम। Another mid band, beautiful. So, कुछ नहीं ऊपर ले जाएंगे। नहीं मैं तो शॉर्ट में ही रह रहा हूँ, हमेशा से शॉर्ट में। All right, guys. So, 1, 2, 3. Your first day too? Okay, no problem. My name is Rafi. My phone number is 647-228-0694. This is a WhatsApp number. It's read by 4 people. If you can't get a hold of Daniel for whatever reason, you can text me and I will try to assist after hours because Daniel's job is really done to teach you. My job now starts to make sure you're profitable, to lead you into trading properly. The way the floor works, this organization works, is Saturday and Sunday he does the training for you, the classes, the theory, the fundamental, technical, everything.
My job in the Monday to Friday, 9:30 to 2, 9 to 1, 5 days a week is to lead you to understand what you're watching here. What is the job here, what you have to do, what you don't have to do, everything. So I'm practical, he is theory. Yes, because he's been leading this for almost 40 years. So now he's in that age of retirement where I, as a student, so don't worry, I've been trading for 20 years. And around 3.5 years ago, I heard Daniel on the radio, and I came and listened. I was new to futures trading, day trading. And I sat right here and listened to him, and then 3 years later, I'm teaching it. So you don't have to worry. Everybody can learn. It's easy. But first, you have to decide, what is it that you're learning? You have to know these things, right? So why I say this is, a lot of times you will now interact with people who you're going to say, I have decided to pursue my career into trading. I'm a trader. And if you don't know some basic things here, they're going to make fun of you. Simple. They're going to say, I don't know. And the first thing they will say is, you're getting scammed. Somebody is scamming you. You're going to lose your money in trading, because that's just a negative connotation without it. Everybody will say, don't get into trading, you will lose money. Don't get into trading, you will. And then eventually your mind says, because they don't know what is it that we do. One of the finest institute in the world, where we have a trading floor, we will give you daily commentary, everything else. So I'm going to go with absolute basics, and then I'll build every day on it. Number one, you're a day trader. You are not a position trader. Position trader holds a trade after 5 o'clock. So your job is that you will only day trade. What does that mean? 23 hours a day you can trade, but 5 o'clock you finish your trading. So you're not holding a position at the beginning, for at least as a beginner trader. So there are 4 time zones, 3 to be specific, very high volume. 9 to 11 in the morning, 2 to 4 in the evening, and then 3 o'clock in the morning. These are the 3 time zones where the money is moving like bullets. Like, so that's why from 9 to 11 you won't see me talking about too much teaching. Now, because it's 10:10, my trades are done, I can kind of teach you what is it that you're doing. So number one is, you're a day trader and you're trading futures. So that's a word that you should get accustomed to. You're not trading stocks, you're not trading options, you're not trading crypto, so you are trading futures. So that's a word. There are 20 different things you can trade on the internet, but the one you are trading is called futures. So what are you looking at here is a market called S&P 500, right? So so number one, you're a day trader. Number two, you trade futures. After you are experienced trader, maybe within 90 days, you can use this software to trade options, stocks, crypto, indices, anything in the world you can trade. German market, Indian market, doesn't matter. But at the very beginning, day number one, I have to explain you some very basic things, that you are a day trader and you trade futures. So one thing you have to, now what platform do you use to do this? It's called NinjaTrader 8.1. So that's the platform you have in front of you, the software that's running. So now you sit at a wedding, you talk to somebody, you're like, I'm trading, and then you say, I'm a day trader and I trade futures and I'm using NinjaTrader 8.1. So some very basic thing. Number 4, they will ask you, what algorithm do you use? So the word is use algo. Algo means analysis in terms of functions and math, right? So the algorithm that you used is called super areas. So this software, this charts, all these lines are done by a server called super areas. So because some people say, hey, what do you use? Do you use Meta? What do you use? Renko charts? I know it's technical, but basic is you're a day trader, you trade futures using NinjaTrader, and you are
trading super areas algo. The last number would be, how are you using your money? Like, what firm do you use? So at the beginning, we will give you something called a funded program. So what is a funded program means? You will never, ever, ever invest your own money at the beginning. Meaning that, okay, you're ready to trade, you feel like I know. So when I know you've done your theory, right? I bet you don't know what this line means. This line does, you don't, I know you've read it, you've done the lectures 4 times, 3 times. The day you understand what this line means on the chart is the day I can say that you're ready to invest. Not your money, but a funded account company money. So we have a full roadmap for you that if you don't know how to trade, I would never recommend putting $1 into trading. So the way the program, you will do at least a month of demo or 2 weeks at least, minimum. The demo that you have, you will play with the simulation, buy, sell, buy, sell, buy, sell. After you have convinced yourself that you are ready, you can take profit every day. I can buy, I can sell, I understand all of this. We are going to give you an exam. What's an exam? It's not a written exam, doesn't ask you about mathematics. It says, take $1,500, double it. So that's, you have to make $1,500 in a demo account. So that's your exam. So this is the software. When you open it up, you click on simulation. You don't click on live. Like I said earlier, every 2 weeks this account will expire and then you will have a new account and then new account until you're comfortable. I don't care how much money you have whether 10,000, 20,000, 1,000, 100,000. I don't think any 4 of you have done futures before, right? Futures. So futures game is a word called speculation. So futures trading is speculation. You're just telling the computer if the price is going to go up or down. That's it. You're not caring about anything else. Now, I have to be very clear, trading is not gambling. Even futures trading, some people say, is gambling. But let me tell you a clear example. I'm sure 4 of you have a real estate friend, right? Always, everybody has a real estate friend. And they send you a deal. That this is how the deal goes. That in Niagara Falls, they're going to build some units, 500 units, 50, an apartment building, and I want you to buy it, right? And how much is that unit? $500,000. So let me explain the myths of trading first. Everybody says trading is gambling. It's not. Last Saturday I gave a lecture and I said, in marriage, you don't do due diligence of your partner. That's gambling. You go buy a car, you don't look at the engine, transmission. That's gambling. So anything in life where you don't analyze anything and just randomly give money, that's gambling. Whether you're gambling your life away in terms of, so if you are looking at anything in life without research, even trading is gambling, very clearly. If you don't know where to buy, where to sell, you're like, because how gambling works is go to Casino Niagara, take some money out, you're betting. You have no idea what the outcome will be. You have no idea because it's random. Because of randomness, the whole trading universe is kind of not gambling at all. So let me give you a clear example. Some people hate this word speculation. And they said, you know what? I can do stocks, I can do options, but I don't want to do speculation. A real estate deal goes like this. A 500,000 condominium is being built. You will buy it 2022. It will close in 2025, right? And how much money you're going to put up? Like 50,000 as a deposit structure, however, 50,000 down payment. And at the closing time, they will ask you to get a mortgage, or your real estate friend is going to say, well,
I can sell that condominium for you. Without you owning it, we'll sell this file to somebody else, this contract to somebody else. That's called assignment clause. So you booked a condominium, and everybody did, including myself, in 2022. I went to University of Waterloo, I looked at a condo, it was $285,000. Great, it was cheap back then, 500 square feet. I put it on rent, 18 people were staying between 4 of our apartments, and I was like, what the hell, this is wrong. But anyway, so I bought it for $285, and during closing, before closing, the price just shot up to $325. So I didn't own it. I basically sold that piece of paper to somebody else who was ready to give me $325 for it. He didn't wait for it. That's called flipping a contract. That is called speculation. We are doing the same thing every day, but our speculation is for 5 minutes, for 10 minutes, for 15 minutes, for 2 seconds sometime. Sometime it is so fast, you blink an eye, you can flip your contract. So we are not doing, so if anybody says to you speculation is gambling, just say, well, then everything else is gambling as well, because in a deal like a real estate, you are looking at speculation and it is wrong. Long story short, this is a price of S&P 500. S&P 500 is an index of 500 US companies. It's called Standard & Poor's. What the price you're looking at is a contract for Nasdaq. So Nasdaq and S&P. Right now the price is trading at 57.62.75. You tell me, is it going to go up or down? That's it. I don't care it goes up, I make money. I don't care it goes down, I make money. As long as my direction is right. As long as your direction is right, you will make money. So what the computer said, buy, 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 buy. Profitable, 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 stop loss. Okay, so computer will do the analysis for you. The algorithms, the software is going to do all the hard work. And look at how beautiful this is. And I'm going to just do a short now. So overall, the computer does the magic, you just have to click. So every time, like, look, it went from 62 to 63, right? You made $50. That's how fast it is. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. You will be like truly making money, crazy money. Crazy money is, I'm up $17,000 in the 45 minutes, right? So there's a lot of money moving in the markets. You just have to be right. So, and we give you all the guidance, and everything is where to buy, where to sell, as an informed decision. So computer is saying what you learned. If it's green, buy. If it's red, sell. That's all to be honest, that's all there is to it. You don't have to make your life complicated. If it's green, buy. If it's red, sell. Simple as that. There is no third option whatsoever. That's it. I know it sounds too easy, right? So, but look, put your cursor here, put a buy here. Put your cursor here, put a buy here. Put your cursor here, put a buy here. And if it moves up, you're done in terms of buying and selling. That's it. So what you're watching here is computer doing an analysis. Where should be the price? So computer is doing all the hard work and is calculating buyers and sellers and volume and lots of things. And it's saying, you know what? Right now the price should go down. Computer will start to, because it's mathematics, right? It's all math. And from here, we should think the price should go down because of this number I'm watching, 65. I think we are at the area yet? Yeah. At 65. So it should give us there you go. I didn't even have to speak, and then we are in profitable right now. Ho gaya ji. Le liya. So because of this number, you can predict. Eventually, this will become second nature. So all 4 of you have a job tonight. Log on to superareas.com and watch my first video called How to Get Started with Ninja.
it'll tell you what all of this means. Like, so I know you've done the lectures, this line has a meaning, these two lines have a meaning, these mid-band has a meaning. So once you, but at the beginning, very beginning, for at least a week, your job is what? Green to buy, red to sell. Step one, open up the computer, check the news. Is there any time I should not be trading? 10 o'clock, 9:30, red, stop trading. Number two, check the base and the range, which will give you every morning, automatically from here. Yes? Where to watch the news, like which? A Forex Factory, chapter 1 of the video. So if you took the first lecture, there is a website called Forex Factory that you check the news. But 179 this time. फिर कुछ करें? ये नहीं 250 पे करना है जी, जो भी कुछ करना. हाँ, exactly. देखिए हम लोग एवरेज कर के निकल आएंगे. Look at the market. Almost 250 is the number for us. So 182. $185, $186. Good, keep going. 200, almost at 200. Because it may go and test night session high, which is 248. 248, 249 is the night session high. So watch the first video, and to be honest, that's it. There is not really any magic. Every day I will come, and the day you understand me, what am I saying? Hey, night session high, night session low, R1, S1, S2, diversion, mid-band. That is the day will put you in a funded company, right? So that's the, and that's it. If any question, you can always text me, call me. And look, 50-point swing, guys. I gotta take some. No problem, no problem. One thing is like whatever you're talking about, 250, is that on the Nasdaq? Yeah, that's the Nasdaq. 50-point swing. Oh, जाने दें यार. 250 से बेचेंगे. 204 पे ले गए. Night से. 5 micro should be okay from 250. Shorter, come on, man. Don't say long, man, brother. So we kind of done today. So we can go watch the video. Yeah, you can sit here until 4, and you can ask me questions too. But majority is I want you to watch the buy and sell first. How do you buy something? How do you sell something? That's the main idea. There you go. I did short and I made my money and I'm out. That's called an overbought trade. Because 50 points gotta give some swing, man. Wow, what a big dip. So 250 is still valid, guys. लेकिन आपने मिड बैंड लिया ना? मिड बैंड से एक 2 टिक नीचे हो गए, वो सीधे रह गए. लिटरली ये सुपर जा रही है. हो गया ऊपर का तो हो के खत्म हो गया. वो देखें एरिया देखें 71 R1 चेक करें. आगे यार 79 है R1. तो अगर 72 ब्रेक कर 79 से सेल करना है, बाकी आप मिड बैंड से बाय करते हैं.
Come on, go. तो आपकी लैपटॉप को क्या मसला हो? पता नहीं, अभी तो ऑन हो गया। ऑन? कल इसका वो बैटरी जो था उसको वो ड्रेन हुआ था, मगर ये रिफर्बिश है तो मेरे ख्याल में वापस करना पड़ेगा। Okay. So, like I live far away from here. Yes, and yes. Danielle told me to come here and show me everything on today Okay. instead of coming every day. So I'm not sure you're gonna be the one to show me or him. Him. Okay. Like, you just talk to him, say, how far are you coming from? I live in London. Oh, that's far. So in that case, you'll be connecting through live Zoom every day, right? So, And then I do it on home. sure, yeah, if you like, if you like. But Because I have students worldwide, right? So, but that one video, please do watch because that will, even if you want to sit here today and start watching it with the headphones on, you can use the office or there's a opening on the reception, because that will explain you how to buy, how to sell. Full, sorry? Yeah, the one it says Beginner's Guide to Ninja Trader. Yes, that's the one that you set up. Yeah, I'm just gonna find out. Every day you watch, Happy, thank you so much. No problem, absolutely. Take care. उनको पहले माइंड में सबके सेल बैठा दिया, ले जा रहे हैं। ऊपर जितना जाएगा वहाँ से सेल लगाने का मतलब आगे जाके। It may be consolidating here to go up again more. Let's see if it makes the 150 as a base आपका बना रही and then because now it will do 10 up, 10 down, 10 up, 10 down, and then maybe go to 250. You guys have a good day. Take care, boss. Make more money. The target is not to make all the money in one day, every day, little bit, and then. जी आरटीआई में जो सिंबल एक्सचेंज है उसमें दो ऑप्शन दिखाते हैं ES और Z4. Yeah, that's fine. Z4 is fine. Z4 is the latest contract. Now look, 10 up, 10 down, 10 up, 10 down, and let's see if it tries to go and break 205.
Let's see which way it wants to go now. ये लेगा 200 रुपये नहीं 250 है जी, नाइट सेशन हाई। So again, guys, tomorrow, no, election, stay away, stay, according to Daniel, stay in short. And your November 7th, रिजल्ट सेम थे कि ये कल नहीं, अभी रिजल्ट कुछ स्टेटों के हफ्ते बाद जनवरी 2 पता लगेगा। हाँ, नहीं, I mean, most will start to claim victory, कि इतने वोट आ गए, इतने, so certain states, they don't count for at least a week or 10 days. the results are on Wednesday, right? Technically, yes, yeah, but majority of results don't come in like that, right? So it went as high as 204 right now. Isn't that incredible? From 13 to 204 is 200 point swing. यहीं पे ट्रेड करवा रहे हैं बस 20 Yes. 25 पॉइंट नहीं सर, रैली हो गई, ऊपर लेके जा रहे हैं बस। रैली नीचे की होगी, नीचे की हुई, अब ऊपर की है। अब नाइट सेशन हाई की है। सेशन हाई तो भी है। एक बार टच जरूर करना होता है नाइट दिन में, इसमें कभी कभी करना पड़ेगा, डेली करना ही होता है। तो 30-20 में डाइवर्जन लगती है। हाँ। Yes. नहीं, एनी टाइम। प्रॉब्लम पता क्या है? सिर्फ नैस्डैक 250 तक चली जाए, गिर जाएगी। तो मैंने 1.5 पे शॉर्ट दिया। अभी ट्रेड में है, कहाँ से लिया? ईयर में 762.5। एनी टाइम। आ जाएगी सर, कल आ जाएगी। यार कल आए, हम डे ट्रेडर हैं। कौन सा कॉल वेट करेगा? 10 मिनट बाद। तो मैंने आपको जो किया भाई, कल आ जाएगी, नहीं आएगी कल आ जानी है। अभी 10:30-11 बजे आ जानी है, एक तरफ मार्केट हो जानी है। कितने आ जाने कल ऊपर पति कुछ नहीं कहा क्यों जी, कितने से जा सकती 10:30 वाली कैंडल आ ऊपर लै गई सी, वो थल्ले लैके आ रही है। तो 5 पे कंफर्म हो जाती है। 1.5 पे शॉर्ट दिया। अब जाओ आइए। फिफ्टी 10 पे भी डाइवर्शन लग गई ईएस में। I'm still waiting for the CEO of Legends to make the change one time. So those I know who are waiting with me. क्या टेंशन है? ये अभी मंथली चार्ज कर रहा है ना, तो वन टाइम ले जाओ। नहीं, हम अभी उसने किया ही नहीं था, अभी वो फिक्स नहीं किया मैंने। फिक्स नहीं किया। ये तो एफटीटी का निंजा पे भी फिर और डिले हो जाएगा नहीं, वो अभी हाँ, वो तो कब से कह रहे हैं, है ना, जुलाई से बोल रहे हैं। ना, उनका रिस्पेक्टिव तो और चेंजेस हो रहा है।
स्विंग नहीं आ रही। नहीं आएगी 250 के बाद आएगी। कंसोलिडेशन टाइप हो रहा है। 5771.5 यानी का सेल करें राइट सेल करें 8.5 पे शॉर्ट किया हुआ है। आप निकल आओगे? हाँ निकल तो मैं प्रॉफिट की वेट है। सर काट दिए करो फिर दोबारा ऊपर चल जाए, फिर ट्रेन फंसी रहती है। आ गया प्रॉफिट। There you go, it's coming down fast now. चलिए ऊपर। जितना मन कर रहा है मिनी पे चला जाऊँ। नहीं मिनी पे जाएं ऊपर, जब एरिया है पता है कब? 93 पे। 93 or even, because remember it went as high as 76, right? So our first area is truly 82 to 79 to 82. That could be it. I'm waiting for that. For ES 79 to 82. नहीं यस मैं एपेक्स वगैरह में कर देता हूँ हल्का फुल्का। माइक्रो नहीं है, तेल निकल गया यार। क्या? 62 माइक्रो में हो रहा है। हाँ अब अच्छा एक क्वेश्चन आसान है, 2 कर लें रेदर देन के पूरा मिनी लेना है। अगर 2 माइक 3 कर लें, 3 भी तो मिल जाए। $15 का है ना 50 की जगह, हाँ तो 15 भी अगर 10 पॉइंट मूव हो गए $150 है यार। रेदर देन के इतना बड़ा वो गले में लेना है 15 मिनी का। मेरा एफडी में चल रहा चेंज नहीं होना, मैंने काउंटर नवा लेना पड़ा जैसे मैं नवा पैसे डालता पे आ रही ये उड़ जूगा वेल पर मैं उधर नहीं रहना मैं फिर बढ़ाते 9000 करके चल गया जी उधर राफा जी तेरा दिन मारा ही उधर नहीं टेस्ला एक दिन, मेटा अगले दिन। 9000 चल गया जी, मैं बढ़ा के फिर 700 ऊपर करता बढ़ा के फिर मैं वो अग्रेसिव जो बारी ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੰਗਾ ਰਿਵੈਂਜ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ 7-9000 ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਓਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। Let's see if it tests the base as a S1. मैं चंगा बोले जितनी डेबी लगी थी ना बाइक तो बैठा है मैं निकल गया मैं तो कितनी बाइक चल गई सारी आज सवेरे देख लाई नहीं मैं बाइक ही पर मार के डिगे भी आवाज माइंड के बैठा भी लेके जाना पर उन्हें आज प्ले भी तो कराना ना। तो क्या लग रहा है 250 आएगा? आएगा। आए यार सारे ये Nasdaq है हाँ नाइट टाइम हाई आए थे हाँ वही वाला 250। उसको तोड़ के निकल जाएगा तो फिर अलग बात है। नहीं फिर कल ना नीचे आ जाएगा FTMO में कल। क्योंकि डर तो सारी है ना इलेक्शन के लिए। Yes yes ये तो है। I worry about Republican guys doing that crazy January 2nd thing. Remember there when Biden became when Trump lost the election last time. अभी तो कोई ट्रेड आई नहीं। तो उसने बोला भी ना आई शुड हैव लेफ्ट बाय डाउन
Let me see Kalshi.com. What is happening on Kalshi? 5743. Wow. And both of them are same color. 200 million got traded. Yeah, but that's a gambling site. That's not true polling site. It's fun to watch. I tried to register, doesn't says no. Why? Because free money, man. Okay, created all the liquidation. Let's see if it breaks. I was on $30 right now. I'm like, no, I'm not gonna sell it because it has to go on. इसका ट्रेडिंग वो जो है $400 है, 400 यूरो। ले लिया सर, डन हो गया। मैं भी काट रहा हूँ, मैं 100 20 का। मैं इधर जब आया ना आपने बोला मैं इधर फिर आया अंदर था अब बोल के ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन चलो डन हो गया। ये लिए सर इतना ही बहुत है फिर लेंगे ऊपर 204 के बाद। लेंगे जाने दो ये अभी बाइक बन रही है फिर इसमें लॉन्ग बन रही है वही कर रहा हूँ बैंड लेके निकल गई है मिड बैंड फिट किया है इसने There you go, overbought. Break 993. Break 193. तो उसका जैसे 20 से नीचे नहीं लगे ना 20 से नीचे नहीं लगे उसका जोर लग गया वहीं से लेके वो पता क्या वो पिछली रिसेप्शन बन गई है टू लाइन की आप लोग देख रही है हमको इनको भी देख रही है इनको नहीं देख रही वहाँ पे सेम पे आगे दूसरी टाइम चलेगी नीचे तीसरी टाइम चलेगी नीचे सेम पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग अरे 1 2 3rd टाइम देखती है ये तोड़ेगी ब्रेक हो करेगी तो फेल हो जाएगी तीसरी वाली बाइक चला रहे हैं ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਇਹ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਈ प्ले कराई यहाँ पे बाइजों में FTT करने वाले हैं कि नहीं करने वाले पता नहीं, बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ। आंसर ही नहीं दे रहे नहीं दे रहे जी सर, मैंने एनी डेस्क भेजा, आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने एनी डेस्क भेजा, आपने एक्सेप्ट। अच्छा अच्छा, अब भेज दें, नो प्रॉब्लम। बस सर वेट कर रहे हैं FTT का। ले गए Yeah. Let's see if it breaks 34. Should I get out on a break even? Are you long, short?
I was in a short. From where? 5767 2.5. Okay, but you made money. No. So I was in a, I took a trade for buy, but it went down to 5759. Okay. जी सर दें यानी डेस्क हाँ ये एक ना ऑन करना है सर देखिए अच्छा 271 यानी डेस्क 786 7969 चलें करें Nvidia has come to Dow. Berkshire is going up. इंटरेस्ट रेट कब है अमेरिका में मैं शायद थर्सडे शायद Wednesday Thursday मैं को आफ्टर दी का मिनिमम कितना 270 या 370 375 minimum 370 well, went back up टीएम मुनी तो चाह रहा मैं आफ्टर टी दे वो सब कर दें 290 थे देखो 370 कर करना पड़ना और मैक्स कितना 610 6 yeah 6 ये आप कनेक्टेड हैं लेकिन कोई भी ट्रेड लगाए ना हम देखें नहीं एक सेकंड पहले इससे पहले आप ट्रेड लगाएं उधर दे चेक हाँ जी उधर चेक करते हैं क्या हाल है वेबसाइट पे ओके फिर लॉग इन करें हाँ ये मैं अकाउंट ओवरव्यू में चेक करना था राइट हाँ जी $48 कटन लगना थे माइनस 10 कट गई ये बड़ी स्पीड से जाता है ये नाज़दाक दो प्लस 48 कटन लगा तो 10 माइनस कटेगा चलो कोई नहीं ये तो सही इतना ही है बड़ा अगली बारी 48 कटोगे प्लस तो 58 दो जाएगी या नहीं कहती थी नहीं आई नो नहीं लेकिन चलो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड भी ना ले ले 44 है 58 चलो पूछते हैं जाए अकाउंट समरी अकाउंट इज गॉन नो पावर ओके ये प्रॉब्लम हुआ है यार लेकिन कल के परसों मैंने जब इसको चेक किया ये वाज देखिए। ऑन गोइंग नहीं वो ऑन गोइंग आपने डेली लिमिट ही उड़ गया जी क्योंकि जो उसने डेली लिमिट है ना 5 थी वो 7 पे गई और उसने पटाखा बजा दिया यहाँ से भी लॉन्ग करवा गोल्ड 4000 की होगी कोई हाँ। 6000 7 तो ये अब 3000 का पुराना खड़ा है बैक टू स्क्वायर वन 7 मिला आपको 7 से ऊपर चला गया तो उड़ गया ये प्रॉब्लम नहीं पूरा नहीं था मैं तो 30 मिनट एवरी डे 5000 की लिमिट है मैं 4500 तो उस दिन थर्सडे को जब गोल्ड हाँ। सेल में गया मैंने क्लोज कर दिया दैट वाज 4500 हाँ लेकिन किसी तरह आपका लॉस 72 पे गया और आपका अलाउड 5000 था तो डे की लिमिट क्रॉस हुई है ये प्रॉब्लम है कोई बात रिगार्डलेस आपने अगर उसके ऊपर प्रॉफिट में भी बनाया हो बेशक लेकिन एवरी डे 5000 रीसेट हो जाती है हियर इज माय हाँ। क्योंकि मेरा था कि नहीं या मैंने उसको भी टोटल लिमिट बढ़ती जाती है यस वो आपने 5 बनाया लेकिन डे की 5000 ही है आई मैं समझ जाता हूँ ना 5 बजे आपका 2000 होल्ड पड़ा आपने छोड़ दिया कल रात को काट लेंगे सुबह काट लेंगे 5000 मिला 6 बजे 2 कट के 3 मिला यस एग्जैक्टली 3 मिला नेक्स्ट 2 का वो हो गया 3 और ऊपर लॉस हो गया अकाउंट नेक्स्ट डे का 3 ही मिलेगा पहले दिन तो मेरा पहला अकाउंट तो इसी वजह से उड़ा महंगा यार कि मैं इतना बना चुका हूँ ये मेरे साथ मेरा तो फ्लोटिंग में वही सेम फ्लोटिंग में लॉस हुआ है फ्लोटिंग क्योंकि एफटीएम वो क्या करता है लेट्स से कि आपने 10,000 भी बना लिया फॉर एग्जांपल राइट मेरा 20,000 का अकाउंट और आपका 5 फ्लोटिंग है अब आपका 15 नहीं है टोटल 5 रह गया राइट सो माय ओके इसका बुनियाद फिर अकाउंट कैसे पैसा वही सेम सर चैलेंज पिक करो और कौन सा साइज वही इस पे चैलेंज बहुत ज़्यादा चैलेंज बहुत हाई है बंदा मुश्किल है 20 वाला भाई क्योंकि आपको 50 20 स्लॉटों से जाना है अगर रिस्क ज़्यादा आप कितने हाई तक गए जा चुके थे 4800
52 नहीं 52 तो गए ना, तो इसका मतलब आधा कर लिया था, तो वहाँ से गिरे। तब कितना हो जाए छोटा प्लेट हाँ, थोड़ा यानी कि आप कितने लॉट से जा रहे हैं? 0.41 की 3 पोजीशंस खोलता हूँ, ठीक which is almost 1.5। less than 1.5 actually. इधर ट्रेड दिखाता हूँ, ये देखो आज का 680 बना। 680 बनाने में भी मैंने 570 की ट्रेड काटी है, गलत चली गई। कट के भी $700 बना हुआ है, आप वो काटते नहीं हैं। ये इसको होल्ड रखता, अभी रखता ना, ये 1500-1600 नहीं, मैंने इसको होल्ड किया था सुबह से लिया हुआ था ना, तो इसलिए जो पता है भी ऊपर मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया है, तो नीचे काट के ट्रेंड में बैठा। FT 5 का 5, अच्छा। हाँ जी, मेरा 5 स्विंग बेटा। अच्छा, अगर ये डिसिप्लिन रखना है ना, फिर रेगुलर एफटीएम में आज आपको पता है कि मैंने 5 बजे काटना है, लेकिन ये जो स्विंग दे देती है ना कि नहीं, मैंने स्विंग अभी तक की है। ओके जब भावें ये रेगुलर भी ले लेना, मैं ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਯਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਸਵਿੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਚੈਲੰਜ ਦਾ। 250 guys, everybody wearing 250। और यार स्क्रिल का अकाउंट खुलवाया, उसकी ट्रांजैक्शन की, उन्होंने वो तंग किया, उन्होंने स्क्रिल वाला 600 समथिंग उसमें स्टॉक हुआ। कहते हैं कि अपना वो दें एड्रेस कंफर्म कर। अच्छा, वीज़ा कौन सा है? फर्स्ट वन? हाँ हाँ, पहला वन। फिर इसमें से होगा। मेरा उस दिन टेस्ला स्टेज 2 ले गया। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, बन जाएगा। बन जाएगा। जब हम हिम्मत छोड़ देते ना वहाँ पे, नहीं हिम्मत तो छोड़ना इसको, फिर रास्ते में ले लेना है इसको। मैंने इतनी बार कर लिया, मेरा तो दिमाग हिल गया, नीचे जाके फिर बराबर कर देता हूँ। आज फिर किया हुआ। यहाँ पर अर्ली एंटर हो रहे हैं। S1 पे भी पैसे बने आज, S2 पे भी बने। मैंने ट्रेड काट के फिर बना दी। लॉस को देखो ज़्यादा हो जाता है, इतनी हाइट पे चली जाती ना। वो लिया हुआ था 25 पे FTM, 70 है अभी 20 का, कितना हो जाना था वो 3 पता ऊपर जा रही है, छोड़ दो इसको। ऊपर से सेल मार के फिर बना दिए ज़्यादा। माइंड में सेट बैठा है ना, सेलिंग ही है। गोल्ड की कहना रहा लाइए सेल कंटिन्यू रिक्लाइनिंग एरिया। यस यस, 50-50 होगा और कितना? 39/40 से। ओके, इसके बाद आपने बताया है इसके फिर आप इसकी क्रेडेंशियल कहाँ से उठाने का हमने? नहीं आएंगे एक दफ़ा ईमेल में आएंगे। ईमेल में आ गए, यहाँ ऐप खोलो इसकी, मेरे पास ईमेल खोलो। अब मैं आपको अपनी लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये नैस्डैक चल रहा है ना, मेरा बैलेंस है 2,13,000, 13 बना हुआ है, ठीक है। अब आज की मेरी परमिटेड विंडो देखें, मैं अगर इस पर लॉगिन करूँ ना, तो वो कहेगा कि आपको 10,000 अलाउड। मैं जो भी बनाऊंगा ना, मेरा ये होता है कि अभी मैं माइनस चल रहा हूँ 1500 पे, राइट, माइनस 1600 था। कल ये वापस 10,000 पे आ जाएगी। ये यहाँ पर फंसना होता है, क्योंकि अगर ये स्पीड तो आपके साथ वही हुआ है। मैंने रिमेंबर आपको पूछा भी था, मैं तो पहले वो जाता है बार जब फ्लोटिंग बैलेंस मार देता है। फ्लोटिंग मारता है, हम सोचते हैं माइंड में भी मेरे पास 10,000। हाँ नहीं, वो जब नीचे को आता है ना, 10,000 से ज़्यादा समझ लेते जब हमने बना दिया था। फ्लोटिंग ही अकाउंट आता है। नहीं ऑनेस्टली मैं एरिया से कभी अनसक्सेसफुल मे बी 2 या 4% हुआ बस। वो भी न्यूज़ होती है तब, जैसे टेस्ला का चल रहा था, वो तो एरिया तोड़ता ही गया। ये ऑर्डर कंफर्मेशन आ गया Yeah. और पहले सबसे ऊपर ही आई होगी, मतलब पहले। अब दोबारा लॉगिन कर लें। अब कार्ड चार्ज हो गया ना, हाँ जी, तो आप जाएं अकाउंट समरी पे क्लिक करें, वहाँ लिखा होगा क्रेडेंशियल। यस, नहीं
ये वाली आज की है, ये आज की है, current नीचे जाओ, ये आगे लॉग इन कर हाँ ये वाले कॉपी पे इसको आप ऐप में जाके पासवर्ड भी चेंज कर ये लाइव मैट्रिक्स पे क्लिक कर, सॉरी क्रेडेंशियल पे क्लिक कर लें जी। एंड ये कॉपी है, मास्टर पासवर्ड है, नया आ गया। इसको लॉग इन कर लो मोबाइल पे भी, उधर भी सिस्टम मैं मोबाइल पर सबसे मुश्किल काम ये है जी वेट करना। देखिए अभी भी 2 आउट ऑफ 2 है ना, कोई नुकसान नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है, सब कुछ। 250 से पहले नैस्डैक नहीं, अगर ईएस करना है मिड बैंड, वो देखें आपके सामने करते जा रहे हैं। हाँ मिड बैंड टू गो डाउन, मिड बैंड टू गो अप, राइट। प्यार है, चलो कर लो। ये आज कॉल कंफ्यूजन 2750। ईएस का इतना फियर ना रखें, आपके सामने बैठ के वो कर रहे हैं। लॉग इन नहीं, लॉग इन लॉग इन या अब इसमें डालो, कॉपी पेस्ट कर दो। ओवर हाई या हायर लो, वहाँ से ऑर्डर ले, इट विल कम बैक टू मिड टाइम गिविंग वन। हाँ जी दो। अच्छा आप इन फोटोज की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये बंदा है ना, ये हमारा बंदा है। ओह अच्छा, या हमारा है, पर उसमें इसीलिए गो थ्रू कर रहा हूँ, दीज आर रियल। हाँ, मैंने इसलिए वो जो ये देखिए, अब ये क्या है, तो ये 3000 है ना। always should be above because brown is the price, right? Nice. तो दे आर पेइंग, तो वो जो स्टिकर्स हैं वो रियल है। ठीक। इतना नहीं, मैं इसीलिए आपकी वजह से मैं बैठा, मैंने कहा क्या हो रहा है। It's good. No problem, big. अच्छा दें, एनी डस्ट मैं करवा दूँ, मुझे एनी डस्ट पर टैक्स कर दें, मैं आपको वेबसाइट भेजता हूँ। Sorry. I don't know. नीचे यार चढ़ने का 3000 का तो कहते हैं, 3000 का कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गिरेगा। वो जुनेद भाई है ना, वो बड़े बुरे स्टक हैं 2611 पे, 2611 पे रियल मनी है, माइनस 20,000 रियल मनी। तो मैंने जब 2619 पे आई थी ना, निकल जाओ, या तो वो नहीं निकले। 600,000 डॉलर लेके निकल। हाँ अब 1000 का और 19,000 का। लॉस लेके निकले ना, हाँ प्रॉफिट ले रहे हैं ना, हाँ। निकलना बना प्रॉफिट। सर खींचो ऊपर को लेके जाओ। नहीं, लेकिन 250 तो आया खड़ा है, देखिए अभी 11 बजे है ना, 1 बजे है, मेरा नहीं ख्याल 250 से हमें 20 पॉइंट तो मिलने चाहिए। नाइट सेशन हाई है, तो इतनी तो 20 पॉइंट कहाँ से आ रही है? 17 से। मेरे को लगता है 250 से 280 के बीच हाँ, में कुछ करके एग्जैक्टली, फिर निकाल। तो अभी लेकिन अभी टेस्ट हो रहा है हमारा पेशेंस। हाँ जी नहीं, ये नहीं चल रही, ये नहीं चल रही। तो मैं आपको एक और देता हूँ, मैं इसीलिए कहा था व्हाट्सएप को लिंक भेजता हूँ। ओके मैं नो तो क्योंकि वो 300 ना अच्छा नंबर है टू गो डाउन, राइट? सो क्योंकि जो 790 की कैंडल है ना, वो 300 पे आधी होती है, तो 3 एग्जैक्टली। जी आप विनिंग रेट कैसे देखते हो? सर ये तो मुश्किल डिपेंड करता है आपके रेट। मतलब कितने, जैसे वो डेनियल सर कहते हैं कि इट हैज़ टू बी 80%, अदरवाइज Tools. I think you can do trade performance. यहाँ पर और आप अपना अकाउंट करके जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ मिड बैंड ही करें, ये तीनों देख के हाँ तीनों देख के नो प्रॉब्लम।
Green to go buy, red to sell. So, do you think that this is okay for the first day? Oh, this is incredible, man. Like, आपके sorry accounts के अंदर accounts में होगा. Of course. 9:12. होना चाहिए ऐसा ही. Green to sell, red to buy. आज मैं 2 बजे फिर से लॉग इन कर सकता Exactly. बिल्कुल. हूँ. मैं चलता हूँ. No problem. Anytime. कल 2 बजे आ सकते हैं. हैं? कल मैं अब ऑफिस 4 बजे तक खुला है. 2 बजे आप हाँ, मैं 2 बजे निकल जाता हूँ. मैं 11 से 2 आपको गाइड कर सकता हूँ. और ये ट्रेड में हाँ मैंने ये मिस किया. हाँ नो, वो बड़ी अच्छी स्विंग आई थी 11. अभी फिर आएगी 250. पानी पी लें, ले लिए 20 पॉइंट की स्विंग. So what do you find for the password and login for TMO? On the it says credentials. What's the app? Yeah, but You can change the FTMO app download. FTMO app? Yeah. You can change this password. This is too messy password. No. You can change the password, put your own password there. You can do later. App में आपको every day you can see your performance. मैं तो फिलहाल ट्विटर कर रहा था मगर टाइप के देखो चले. नहीं जाएगी, सब गिर जाएगी मेरे को तो लगता है. 250 के बाद जाएगी जाएगी. There you go, it's above 200 now. The highest it went is 211. All right, we're getting ready now to get to 240, 250, 260. Waiting for 260 or 250? Okay, night session is 248. Level 1 is 260 to 280. Let's see. ये expected high है या नहीं, अभी तो R1 आ रहा है. R1 अभी कुछ नहीं पता. नहीं, पता क्यों? कुछ नहीं है. नहीं, कुछ नहीं है आज. There's nothing happening, so R1 should be a good resistance. NVIDIA ले गया सर ऊपर थोड़ा खींच के, Microsoft भी प्लस में आ गया, थोड़ा सा आप चला गया.
यूरोपियन सेशन 238 लगा के 248 पे चला गया, 10 पॉइंट ऊपर ले गया। मार्केट थोड़ी सी इसीलिए ऊपर चली गई। अभी के लिए वो अलाउंग विद द ट्रेंड ऊपर जाएगी, इसको यहाँ टच करेगी। आपका एनवीडिया बाद में आया नीचे, हाँ 133 बाद में आया, स्कैल्पिंग कर रहे हो, पहले आ जाता। स्कैल्प करो ना, लेकिन देख लो ये कौन सा टेस्ला पे नहीं आया, दूसरे मेटा पे आ गया, माइक्रोसॉफ्ट के रिपोर्टिंग पे आ गया एनवीडिया नीचे। अच्छा एक चीज see if you are going into S&P 500 I'll show you ये मेरे को भी करना चाहिए, मैं करता नहीं। यार तो एफटीएम में आराम से बन जाता है, हाँ, ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में दे देते हैं। मैं जिस ट्रेडर से पूछा ना, वो कह रहे हैं हमने लॉस नहीं लगाया हुआ इसलिए अकाउंट तोड़ रहे हैं। बनाना तो आसान है, जिस दिन लंबा अगेंस्ट चला गया वहाँ काटने की हिम्मत नहीं होती। मैंने तभी 857 डॉलर बन गए, 767 तो काट के भी, तो इसीलिए काटना मस्ट है। डेटा डिलीट पर 15 मिनट्स होगा। कहाँ पे सर? अभी उधर आया था। इधर टीवी पे क्या डिलीट? Nasdaq डेटा डिलीट पर 15। नहीं, वो तो ट्रू डिलीट है, ये आपके सामने लाइव चल तो रहा है। आपका ना ये फ्यूचर का फास्ट लाइव है, पेड होते हैं सारे, वो आप इधर पे करके ले लेंगे आप। फिर खुली, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब ये यहाँ से 10 up 10 down now। बड़ा मान का आपने और कहाँ से चल ये मजेंटा है, बैकग्राउंड कलर में 200 प्लस जरूर चल जाएगा, आगे 500 में 500 500 में चल गई जरूर बदी जा लो सेल ले लो। क्योंकि उसमें लिखा है कि और वो 700 जो ला गया ना, हमने टेस्ला ने लगाया 700 क्या आ गया, फिर ये स्विंग ले जाएगी। आज टेक्निकली भी ट्रेसिंग ये ऐसे मेरा वाला नीचे बंदी नीचे बैठ के अब ये 2 जी बन गया, फिर ये बन गया 0.25 ਤੁਸੀਂ ਐਫਟੀਐਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਐਫਟੀਐਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਫਟੀਐਮ क्योंकि मैं सिर्फ इसी को फॉलो करता हूँ। ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇ 골ਡ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ 100-150 ਦੇ ਲੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲੋਟ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਟ੍ਰੇਡ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਵੈਪ ਆਪਣੀ ਸਵੈਪ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਲਡ ਦੀ फिर ऊपर ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੈ ਗਏ अब आ गई सेल। Yeah, guys, be ready। यहाँ पे मैंने यही दूसरा वाला नहीं ऑप्शन फ्री जो ऊपर जाते हैं, हम कहाँ से लेना ऑर्डर? अभी डबल टॉप हो गया, हर बार ले लो 764 ऐसे लगता है वाइन बना रही है, वाइन बना रही है। नहीं, वो मिड बैंड टेस्ट होने देना। चला आ जाएगी 225। ऊपर जाना एक बार कंपनी में इवेंट टेस्ट होने लगी फिर नीचे हुई, फिर ऊपर हुई, फिर नीचे जा रही है, फिर नीचे जा रही है। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इवेंट हो गया टेस्ट सर, फिर क्लोज हायर यहाँ से बस कर रही है। 5766 क्लोज हायर, आहो। फिर क्योंकि न्यूट्रल हो रही है 100 रुपये डॉट नंबर 2 इसकी बन गई पुलिस का चैप्टर खत्म होने ही देंगे, नहीं 250 के बाद। 250 जाएगा। जिसमें नीचे आना ऊपर लाइन बन गई।
जल्दी करके क्योंकि मार्केट्स तो There you go, guys. Be ready for Nasdaq R1. 260 is our number. 248 is the night session high. So we are getting ready now for that trade for Nasdaq R1. 250. I don't want to enter 30 points early. It's 220. 25 point. मैंने काट दिए थे 25 पे लगा था मैं अभी 105 हो गई उधर ये डाटा कौन सा दिखाता है सी ट्रेडर में नहीं यही वाला रियल यही अलावा ये 20 104 चल रहा है फ्यूचर बिल दिखा रहा है नहीं फ्यूचर नहीं ये चल रहा है 105 You got 226. No, I'm not selling until 250. इसको टच कर लिया तो नहीं चलता नेक्स्ट लेकिन बैकग्राउंड कलर इज ग्रीन ट्राइंग टू गो बैक डोजी that means pressure or downwards is getting stronger so it's a doji very short हुआ नीचे करने वाला Hopefully will go and give me 250 again. Have faith. ये नीचे करेगी go down, you need more wicks upward. Go up, you need more wicks down. अभी नीचे की तरफ आ गई But this is a value area for this trade. यहाँ पे resistance हो रही है इसी दो ये मैंने नहीं अभी बेचा 106 ले लिए 136 दिखा रहा था करते करते 106 है 100 का माइंड में रखा 10 से लिया ना 10 Come on, go back up. जैसे लिया था ऊपर 50 आती तो 20 की देखता हूँ उससे यार सही लगी थी 70 को 66 को लगी Went as high as what, 226. This is where the day you feel Nasdaq betrayed me. Got to huge swing, 30 points. सेम प्राइस से मुड़ रही है ना अगली बार जाएगी अब नहीं जाएगी तो फिर So third area was too far.
I'm still not जैसे ही बननी शुरू हो जाती है disappointed, but अपनी तरफ जाना शुरू हो जाती है आपका आ जाएगा नीचे वाला एरिया आ जाएगा जहाँ प्रॉफिट होती है। कितने दिन हो गए सर इसको? 2 दिन, अभी 4 दिन में बनाना है 20। हाँ, दूसरा दिन। टाइम कैसे और जिसने हज़ार लोग बना दिया के छोड़ने का भाई लगा लें अभी फ्रेश बना रही है वो बना रहे अब आपने देखा Sorry? It's a huge swing, man. 39 points. वापस इस पे 10 more minutes. 5 7 6 7 पे ये वापस है इससे अपना मूव नीचे किया अभी ऐसा तो अपन बहुत है मिड बैंड पे गए लोअर आया था अभी मिड बैंड पे गए मिड बैंड पे भी मार्क पॉइंट का देखते 3 9 यहाँ पे जो चालू है Let it test midband. Maybe it went to create some liquidity, like so. ले जाएगी ऊपर से एरो आ गया उसका ये भी नीचे 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 ऊपर ही आएगी नीचे 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 स्टार्ट हो रही है यहाँ पर If it has enough energy, maybe it breaks 226. नहीं घूमते रहेंगे थोड़ी देर अगर पैंट चाहिए और दोनों तो और दोनों
अगर आप एक मुद्दा पकड़ लेते हैं अंदर साइड नाउ ये आपने क्या करना है उसको करना मुझे पता है और मुझे थोड़ा बात और इधर टच किया मैं ये पहले ले जाए We waited so long only to be returned from 226. That sucks, but it's okay. बहुत लंबा पेज बन गया सर कितने पॉइंट्स का गिरा दिया सर देखें 226 से 174 तक 50 पॉइंट यार मैंने तो लगाई थी साल सर में निकल गया 50 आए मैंने सेल लगाई थी मैंने जल्दी निकल गया मैं भी जल्दी निकल गया ना 80 डॉलर लेके निकल गया 100 कितना लेके निकला 250 106 लेके निकल गया Instead of waiting it for to come to midnight, slow market में अब ये selling market है, right? Selling market में कहाँ से लेना? किस जगह से लेना? किस जगह से उठना? Opportunity opportunity शुरू होती है. मार्केट में पंगे लेने का फायदा नहीं है हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वह ना जिस तरह मेरे ऑर्डर को टच किया लिया नहीं कुछ उसका हम लोग $100 दूसरा ये है $37 सब मसाला अभी सब लोग बैठे हैं आपको पता है कैसे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है रिजेक्शन भी लंबी है कैसे रिजेक्शन भी बना रही आपका प्राइस आने वाला है भाई तो बिल्कुल बहुत खाली ऊपर जा रही है बाय तो अपन काम डन for the day. मिनी में 108 कर 650 when you go there, वो जो registration form है ना
मैंने कहा है ये एक मंथ मेरा नहीं है ध्यान अगर आप इस्लाम की तरह कर रहे हो. Are you in long or short? Waiting. Okay, we're all waiting. Waiting is good. Better than stuck in a trade, waiting is better. Now we now in the middle now. We were so close with 226, but 248 is the number for night session high. I'm gonna go with the 5 and 6 months. See, when there's no earnings, nothing, things are calm. Like it's Well, let's close to like 26. I have to wash my soul down right now. And then it's done. so 2 p.m. Wednesday, stay far away from the bomb. Wednesday? R3 has 3. That's it. Start your journey from when the nuclear bomb starts, your sharpener is going to come to you. So stay as far away as possible. Of course, you will have areas. So R3 S3. Start your journey there. Not और नीचे गिर जाए तो 3 level. इंटरेस्ट रेट तो गिराएंगे ये, First day तो करना ही है. लेकिन अगर कामला हार गई तो शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे. ट्रम्प नहीं बढ़ाएगा. ट्रम्प रेट तो नहीं बढ़ाएगा. टाइम भी नहीं बढ़ाएगा. ट्रम्प ने वो इंटरेस्ट रेट पूरा करने के लिए फॉरेन को लगा देना है सबको आके टैरिफ लगने शुरू हो जाएंगे. लास्ट टाइम उसने टैरिफ का मतलब अपनी चीज़ें महंगी होगी. अपनी पर वो टैरिफ तो लगाएगा. वो मेरे यूएस से कहता लोग Does Apex have a deal going on or no? Nothing. Apex is no deal at the moment, only 50%. मार्केट के बाद जब अकाउंट उड़ेगा ना सबके तब देगा भी लो. जब लोगों का विश्वास उड़ जाता है क्लोज करके फिर कहता है लो. There you go. It's coming down fast. कितना बजे दर्ज तक है. More and more I'm losing hope with night session high. कितने बजे आप ट्रेड है. हैं? मेरी तो ट्रेड बहुत करीब है. मैं 25 पे था पहले मैंने काट दी. अब तो 25 आ रहा है 51 हो गया. नहीं, मैं 30 पे हूँ. मैंने काट के दोबारा बना दी है. मैं तो हो गया डन. मैं तो नॉर्मली लॉन्ग करता था नीचे गिरती है तो और पहली बच गया उधर. It's 160. Come on, man. Almost at a pivot point now. ये क्या Yep. मेरे साथ ही 25 भेजे आप करें.
हाँ 226 से यार 145 हो गया सारा, रेड हो गया स्टॉक सारा, टेस्ला फिर डाउन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस Nvidia प्लस everything is done, only Nvidia is up. Okay, take care. Tomorrow extreme low. Look at the swing, my God. दिल तोड़ गई नास्डैक आज। ये 250 यार इतनी बड़ी स्विंग आई, रिट्रेस आई, लेकिन चलो नाइट सेक्शन से आ जाती है। आपने लिया नहीं ना, मैंने लिया जल्दी निकल गया, मेरा ज्यादा नहीं नहीं, आपने तो फिर कुछ ले लिया, हमने तो कुछ भी नहीं लिया। मैंने 204 से सेल किया, 22 से सेल किया। आपने आप एंड 2 लॉट ले लिया। 1 ओके। तो 210 की अवेलेबल और वो गिरते गिरते देखें 176 के निकल गया। क्या 2 माइक्रो, तो ये बने $4 का और आपने बने 35 पॉइंट। आपने बोला 250, तो मैंने स्टार्ट किया 200 से स्टार्ट किया, एवरी 10 1 ले लेगा। अच्छा अच्छा, और देखें कितनी स्पीड से आ रही। मेरा आ गया रेट पर या एरिया आ रहा है जी R1 S1। मैं देखता हूँ कि प्रेशर इज डाउन, आई एम ए शॉर्ट गाय, आई एम नॉट ए लॉन्ग गाय। वही ना, अभी क्या करें भाई, लॉन्ग भी नहीं दिल कर रहा, मिडिल में है वो। Almost what 50 plus 20 70 points down, still going down. स्लो स्लो लेके जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। जा रही है, जा रहे हैं दो। Where is it bouncing from? 120. Funny thing is, this is morning time right now.
This is where we all started at 9:30. गोल्ड ब्रेक ही नहीं कर रहा है 35 से बोलो बनाया हुआ है फिर 50 पे ले जाते फिर चल जाएंगे 50 15 पॉइंट आ गए Yep. किसी ने एक लॉट भी ले लिया होना है 220 में 2000 गया क्या ले रहे हैं तो पानी उठता भी पहुंची है ले रहे हैं इतना ही बहुत देखो कितने जा Back to S1. As a support है, let's see. टाइम बताएगा अभी. पहले तो गिरने देना. नहीं सर अभी वेट करो 45 पे जाके लेंगे हैंडल चेंज होगी Because remember, previous S2 is your 30 to 50. Oh, 117. Full 100 point swing down. कहीं ना कहीं बाय हो गया. लेने लगा था तो उधर आवाज आ गई इनके साथ फ्लो में चलते हैं थोड़ा देखते हैं अगर भी होल्ड किया है लेकिन गिर गई इंस्टीट्यूशन छुट्टी में हैं? इंस्टीट्यूशन छुट्टी पे है पब्लिक सारे छुट्टी पे हैं आजकल. तो पब्लिक ही लगी हुई है एसमाना नहीं आज कोई हंगामा नहीं है ना मार्केट में. Now I think buying शुरू हो जाएगी. मैंने ली है बाइंग यहाँ से यहीं से यहाँ पे खड़ी है नीचे की तरफ
Doesn't want to climb now. नीचे ही जाएगी अब। क्या कह रहा था नीचे का मूड बना लिया उसने पहले ऊपर का बना लिया था अब नीचे का बना ले गए यहाँ से बाय ये है बाई की सपोर्ट What's the low it today went to? वो तो स्पाइक 13. 1-3. From 226.22 to incredible. ये सपोर्ट है इसकी सारी बात से सपोर्ट लगी हुई है Let's सुबह की $87. ES is at 57.34. Almost expected low. प्रेशर नहीं आ रहा भाई नहीं बाय में लोग है ही नहीं बड़ी मुश्किल से ऊपर लेके गए थे now consolidation 10 points in this area of S1 S2 is still okay because remember it's coming from R1 so maybe will give us some points but let's see 79 सर नीचे 13 तक गई है 13 से नीचे तो 13 below 13
straight swing down 35 points on ES. Wow. आज का लोअर 19894 यही इसकी सपोर्ट है आज का। Let's see what happens next, and we're waiting. S1 में पहुंच गई है। S1 क्रॉस कर रही है। स्पाइक की जाएगी, प्रेशर ही नहीं आता। All right. Let's see, 470. तो भैया आज तो इलेक्शन नहीं है। कल किया आपने भी? नहीं, मैं भी लॉन्ग किया है। लॉन्ग किया तभी ना फिर। No, not that far. From 100. 15 पॉइंट है मेरे। मैं 100 चले जानी इतनी 15 पॉइंट पीछे अभी 59 में 75 सेम पॉइंट।
नहीं जी नीचे ही जाना नीचे का है काट देंगे बस फिर काट देते नहीं एवरेज करूँगा मैं वेट करनी है। पहले वाली भी काट दी थी वो भी आगे नीचे चली स्टिक नहीं ना रहते ट्रेड पे हाँ स्टिक रहते हाँ स्टिक नहीं रहते और चली गई नीचे। There you go, free fall now. Truly everybody's dumping now. Area where 40 points on S&P. Sorry? Almost 40 points. Yes, yes, yes. तो वरना तो मूविंग बना रही ये ली यहाँ से ली मैंने सकते मैंने यहाँ से बाई किया. बनती मैंने भी लिया Let's see. It went down from 225 to और गिरेगी तो जाएगी। Needs to wait, right? sorry? Yeah, I took the long one, but nothing much. $100. Yeah, this one. It's not enough. What was the area? It was the area, bounced from the area. Very close. और अच्छा बाउंस बैक करके काट गया हम्म। ये ले जाएगी फिर ऊपर ट्रेड अभी आवाज कैसी आ सकती Hmm? ये आवाज कहाँ से आ रही है अंदर से. बैक साइड में Possible. ले गई ले Yeah. Done. Area was valid. वो touched. आपने कुछ एरिया लिया? नहीं लिया. ठीक है. Anyway, आपका 17 से बनता था कि नीचे से, क्योंकि अगर गिरती जाए, it's okay. But it bounced from the area though.
20 पॉइंट और खींचते तो ट्रेड का मजा ही आ जाए। आपने निकाल दी? मैं तो एवरेज करके निकल गया था प्लस प्रॉफिट से। निकल गया प्रॉफिट से, पर एक लगा के रखी है ना अभी। नहीं वो नहीं लगाई, कुछ भी नहीं। आई एम नॉट इन एनी ट्रेड। ये जाएगी अभी। You may go and test. जाएगी अभी 50, 20,000 तक, 40 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। ज़्यादा भी जा सकती है। बाई है यहाँ से। नहीं ये वो नीचे जो लगा। नहीं, पहले मैंने 100 पे ली, दूसरी नीचे जाके 53 पे ले ली, वो 80 पे आके प्रॉफिट से निकल गया। अभी डरेगा ना, लेनी चाहिए है? नहीं अभी तो अभी कोई एरिया नहीं है। नहीं ऊपर लेके गए ज़्यादा, बैंड टच करके देखते हैं। मिड बैंड लिया है इसमें। जनवरी में 55 दिखा, 24 वहीं से गई है। सॉरी नहीं, पहले ली 97, फिर ली 55, 25 आ गया। दरमियान में लेके तो प्रॉफिट। वो अगेन overbought, mid band, overbought again, sell, you will get 5 points. Gain came down, no problem. So below 17, because that's where the morning session low is. Since last 2 days, what's the lowest? Our lowest has gone to 13. So 13 is the lowest. $55 again.
49, 47, 46, 17, 13 is the night session low. Sorry? Strike price is above because we're in downtrend right now. ES is making a divergence on 1510. So 28, what is our area? 28 on ES. 19, expected low is 19. So we wait until 19. AMP future says margins are increased for tomorrow for presidential election. So Margins increased they are increased for Nasdaq. for every market. That's why it is down. सबको सेल में बिठा दिया, अब ले जाएंगे ऊपर यहाँ से नहीं, थोड़ी देर बाद जाएगी और भी सेल में आ रहे हैं, शरीफ वाले सेल में आ रहे हैं और भी There you go. Now truly we're getting into that area of morning 57.24. 17 के बाद, yeah, 17. आपने यहाँ से भी 2 माइक्रो लगाने हैं, एवरेज कर सकते हैं. It's not that big of a deal. Taking this area? Sorry? We're taking this area? It's not an area. It's night session low area. Night session low area. So अब यहाँ से चढ़ जानी चाहिए इसे. या लॉन्ग लिया था आप लोगों ने? ठीक है.
अगर ट्रेल कर सकते हैं तो कर लें। निकल गया, खत्म हो गया, डन हो गया। तो जितना गिरना था गिर गया ना। अब तो लेट, काइंड ऑफ लेट। फिर अब 28 को तोड़ने देना। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन अब देखिए 28 से 50 तक 30 पॉइंट तो वैसे निकल चुके हैं, राइट। तो जिस तरह मैंने उनसे कहा था ले लें, अब कुछ बन जाएंगे पानी। ठीक है, कोई बात नहीं। वो देखे ना, वो चढ़ गया, गेम पूरी हो गई मेरी। अब हम कहाँ से मैं लूँगा 28 के नीचे से एक दफ़ा। आपने ले लिया, ठीक है। हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप 10-10 दफ़ा भी एवरेज करेंगे, नहीं पकड़ा जाएगा। नहीं, एक लॉस भी माइंड में रखिएगा। हाँ, कि किस एवरेज पे मैंने आज 4 ट्रेड काटे प्रॉफिट के बाद भी, कि वो मैंने कहा भाई अगर यहाँ से गिर गई तो अकाउंट तो ना चला जाए। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो। हमको तो मैक्सिमम 300 बनाने का वक्त बनाने का है नहीं, इसलिए एक सही करते हैं। Where did it bounce from? 24. ES bounced from 24. We were thinking it would bounce from 19. It's okay, no problem. I just want to see how many lower lows. सेल वाले ही हैं कल, क्योंकि ऊपर से बेस प्रेशर लिखा होता है। चली गई 1000 नीचे 50 की लगाई, कर दिया कम नीचे अभी गिर जाएगी, फिर लेंगे। अब कोई नो ट्रेड है नहीं, अभी राइट नाउ नो ट्रेड। एकदम बना लेंगे, 1000 बना लेंगे सीधा। Okay, now let's look at
our chart for ES today as an analysis of another trade you guys can take. It's called breakout. So ES, crude oil, natural gas, or that's it. ES, crude oil, natural gas, and gold. 4. So if you look at just the history of, these are the trades behind you on 1510. This is a 1510 chart. So we have one person who's gotten a lot of payouts and he takes one type of a trade. Okay, mid-band is okay, but if you miss mid-bands and if you think mid-bands are not working for you, but look, as soon as it makes a previous high break, take a 1 point. So in this case, the high was 57.68. You have this number in hand, right? And you take this mid-band or not, doesn't matter. It's up to you. If you take this mid-band, it's great. You can make money going up. But you can always take 1 point or 2 points the moment it breaks a previous high. With the stop loss, there is a chance when the market is smooth. So look at this case. From here to here, it gave you 1 point. From here to here, it almost gave you 2 points. So going up and going down, both ways you can take ES, MES, breakouts. Let's look at this way. This was a lower low, right? The moment it broke previous lower low, you enter and you got 7 points minus, so at least 3 points here. It broke previous low, it gave you 2 points here. So the moment it breaks a previous low or previous high, you can enter for 4 ticks. At least 4 ticks are there. Test it for the next. So the idea is this. Price went up and made a higher high. Whatever the number is, it comes back, and if it breaks this higher high, this one, you can enter here for long position. Test this on 1510 gold, 1510 crude oil, 1510 natural gas. You will see your chances of success is right here even. It gave you 2 points. So analyze the 1510 chart. It's called back testing. And you can keep testing over and over. Let's go down here. In this case, it didn't break it. It made a double top. No problem. But if it breaks this, you enter here, it was just a free fall. So wait for a previous low to break and previous high to break, and you will see many opportunities through the day that you can enter as a trade as well. Here you go. Again, even though the swing was this big, it's okay, swing came. Lower low, it breaks the previous low, you enter, take a trade. So let it break previous high or previous low and go for 4 ticks. 4 to 8 ticks should be okay. In smaller markets though, ES, gold, natural gas, and crude oil. In Nasdaq, we go opposite. When the swing is so high, overbought, 99%, breaks another higher high, we sell. So that's one way of watching it. That look, one here, one here, one here, one here. So 1, 2, 3, I can watch continuous trade. Let it break the previous highs and lows, and then you can take 4 ticks. And look how back market went back up. It's crazy. आपने लिए कुछ पॉइंट कुछ उस वक्त चलती गाड़ी से प्रॉब्लम ये होती है कि जस्ट लाइक बैक होम इफ यू ट्राई यू हैव टू अंडरस्टैंड अब चलती गाड़ी में अगर वो रुक जाए ना तो आप उल्टा गिर तो so that's Do you take that while it's dynamically going down? sorry While it's dynamically passing? no even though if it's going down, makes a lower low, goes up, tries to make another lower low, you enter for 4 ticks. Yes, passing that previous low. Yes, तो मैंने literally अभी लिया. हाँ ले लिया ना, 1 point चलेगा. Just wait for the previous high. When you were explaining, I just
It works every time, man. Not every time, I should say. It works most of the time. So test it in crude oil, natural gas, not in Nasdaq, please. Nasdaq is good, but you're supposed to take a short, because look, right now Nasdaq got overbought, 42 points, right? I would not do a sell from here. I would wait for the mid-band, let it go high, then I would sell. So I'm combining divergence with overbought. Yeah, you missed it, it's okay. But ES went back, came down 40 points, went back up 20. So the swing is 50%. All right, 12:22. I'm done for the day technically. So I will see you guys tomorrow. I'll just be sitting here just watching election results behind me. There won't be any trading. Yes, both extremes. Yes, open up your computer, watch R4, S4, and according to Daniel, things should go to S4, S3. So if let's go to S4, then we Buy. So S is support means buy. R is resistance means sell. So we will see what happens tomorrow. But as long as you made money, you gave back some money, as long as you are even going $1 in positive, that's a good sign. Back up from S2, so. नहीं सर जाने दे इसको अब ले जाएंगे सब जिधर मर्जी जाए आप हमारी दुकान हो गई बंद हमने नैस्डैक से जितने पैसे निकाल लिए तो निकाल लिए अब वापस नहीं देने उन्हें And look, even if it makes that rejection wick, look at the ES. If it went down, created a one red bar, went back up, you can probably try to get one, but wait for higher high. Isn't it higher high? I know, but wait for let it come down and break that higher high. That's the ATM we are writing for you guys, where it will automatically take a higher high, lower low, but it's not successful when the problem is, it's great when the market moves the way we want it to move. When it starts doing this, then you have lots of stop losses. And so again, number one, areas. Today, even areas worked incredible. तो आपने कितने पॉइंट लिए थे सर? 10 पॉइंट 10 ठीक है एक माइक्रो से दो एक माइक्रो तो 3 ट्रेड किए दिन में तीनों सक्सेसफुल तो हम ये कह सकते हैं आपका 100% है गया अपनी मर्जी से नहीं आप ट्रेड किया हाँ थोड़ा जी अपनी मर्जी से नहीं ट्रेड किया आपके उधर ਤੁਸੀਂ काउंट दे जाते क्योंकि आपको लगता था यहाँ से प्राइस ऊपर है या नीचे तो खुद नहीं बढ़ेगा ठीक है एक भी डॉलर बढ़ रहा है ना और ट्रेड 3 अच्छे किए हैं ना बेसिकली उस अगर आप 2 माइक्रो भी डाल देते ना हमने कहा 28 आ गया है तो अब निकल जाते नो प्रॉब्लम इसीलिए हम कहते हैं इवन जो माइक्रो वाला है ना अगर पीए हो $50 रोज बन जाते हैं विदाउट एनी हेडेक सो all right time to go and watch the news ठीक है yes sir they're not ready yet हाँ okay Nasdaq you have to set your stop loss from an area
should be like, if you're doing micro, your profit should be at least 10 points. So 40 takes profit and 80 takes loss. Yes. So 40 and 80. That, yes. With Nasdaq, for example, we just watched those areas. We were hoping price will go to 250 and sell. It came down from 226. So it's kind of crap in today. So today, but normally, if you take R1, R2, S1, S2, no problem. Last week was crazy because of earnings, and then you have, we were looking at S3, S4, R3, R4. Tomorrow again, we are going to just sit and watch. There is no... What are the minimum for S&P? हाँ S&P के minimum क्या होते हैं? S&P के 3 पॉइंट आपको मिल जाते हैं एरिया से, बस 12 टिक्स, 12 बने. Yes, no. Your stop loss is far. So if you're on R3, generally 5 points are okay. So 20 ticks you can get from an R3 point. The higher it is, the more points you can grab. It's not an ATM that R1, R2, R3. R1 we're there for maybe 2 points, right? R2 we're looking for a little bit more, but if it gets to expected high, we are waiting for like 5 points. Yes, but generally because ES moves so slow, you can just put in your orders yourself, move it around, right? So just wait for the number. For today, the numbers were there and they were hitting the way the computer predicted. Now, only issue is that you gotta start early, because this number start around 8:30, 9 o'clock, and by 11 you're done. You can't. When you came in, the price of Nasdaq had hit S1, S2, R1. So you have missed the whole 3 things, right? So your options to trade areas are less now. Probability. What are you waiting for? True R1, maybe R2, but it's not going to happen because of today, right? So truly the trading time morning is your until 11. And then you say, all right, but because if you enter now, then you can take those trades, mid-band trade, overbought, oversold. But generally a morning session is perfect for areas. So you go, right now I'm waiting for, if the price goes to 20,250, I would sell. That's actually 245 I would sell. Because that's where the night session high is for Nasdaq, and that's where I'm waiting for. 230 I sell. 5 और, so I'm 240. 1% I sell. Selling जो मैं 5 पॉइंट लॉस देख लूँगा, फिर प्रॉफिट नीचे कम ले लूँगा. 50 में फेंकोगे तो लेते सारी प्रॉफिट आ जाएगी. Yes, 48 पे, क्योंकि नाइट सेशन. और ये अभी वो एरिया सेल का है. अपने 10-20 पॉइंट लेने हैं, अकाउंट बंद, सिस्टम भी बंद, पैसे बन गए. So now because it's interesting, it went from morning, it opened here, Nasdaq. First it went down to 120, 130. We got exactly 10 points while sitting here from S1. Then it went to S2 and we got lots of points. Then it went to R1 almost and we got lots of points, right? So with it, always you will make more money in short, always, within a day too, because panic selling, people hit sell, right? So the moment you see, oh my God, it's coming to an R zone, sell. Not any R, R3 is the most highest possibility of giving you the money. So those numbers are very powerful in that sense. So then you don't do R1. No, I do, but maybe I just take 2 points. So Nasdaq, because R1 even can give me 10 points, S1, but not more than that. But right now, if you wait till 248, the price behind us, you will get money. And you shouldn't have to do an average. Shouldn't have to do it. But because, man, we just saw the market fell from 226 to 126 to 26. Hey, that's 200 points happened
in a matter of what 30 minutes 200 पॉइंट गिर गए यार, और वो हमारे सामने, मुझे तो वो फेलियर था कि आज मैंने मिस कर दिया, मैंने कि राइड ही मिस कर दी पूरी. और no, we just don't care about the charts, numbers. I don't follow any charts. I look at the numbers and I follow the matrix on the areas. So I look at, I go on superareas.com. I would quickly find out where this price is. Okay, so I just need this number, and then I quickly correspond. Is it R1, R2, R3, R4? S1, S2, S3, S4, right? Based on that, I will make my decision. So right now the price is 20,120, right? I am waiting for this price to go 100 points more. Then I will sell. So that's my, if it goes to 20,017 or 13, I would buy. So how do you calculate that? No, it's the computer does it for me. No, meaning how do you know when you No, when this price gets to that number, and I would, come up with that number? sorry? How do you come up with that 200 number? It's written on the superareas.com. Or is Yeah. the areas? All the areas are written, right? So I'm waiting for, if it doesn't, like all of us were waiting for 248. Price went to 226 and shot down 200 points. Unfortunately, it's okay, no problem. But generally, if coming down, we all bought it at 250. And then it gave us the points. Now anybody who's going to get stuck will be stuck until 5 p.m. because it will either go up or down. So this is my ES thing. So now our higher high is 57.48.75. If it breaks that, you should have 4 ticks into it, hopefully. So we are at 110. So if you look at Nasdaq, if you look at those numbers, your chances are very positive the moment you figure out where am I going to enter, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3. Wait for the price to come to you. Not, I know everybody says, oh, it's going up, it's going down, it's going up. In ES, market is slow. Yes, you can attempt a mid-band. That's one thing. You can attempt a top of the bar, low of the bar. Look at it. Even going up, 1 trade here, 2 trade here. I see 2 trades, positive trades. You just got to get our entries right. That's very sure. So wait for, problem is I see you coming quite late. All of this. I'm in there in the morning. Yeah, but normally 9 o'clock you listen to Daniel's brief, and the moment you figure out where I'm going to sell from, where is the price right now, whether you do ES or Nasdaq, doesn't matter, or any other charts, gold, crude oil, natural gas, you just look at where the price is and where the price is going to come. So these are called support and resistance numbers. Let me just close this. So let's write this down. R4, R3, R2, R1. There's no R4 in the chart. It is extreme high. Extreme. Expected high, extreme high. S1, S2, S3, S4. So computer predicted in advance 4 levels. That if it goes here, the price, I should go down. I should go down. I should go down. I should go. If it goes here, I should go up. I should go up. Should go up. So support zones are your support zones of buying, right? So in the morning, wherever at 9:30 the price is, so you look at the price at 9:30, right? And then you see, all right, which zone is close to me? And the moment, for example, today, R1, you would short from there. And then if the price went to S2, you would buy from here for a few points. In between, you can skip everything. So wait. If the price doesn't come, doesn't work. But even today is slow day,
it gave us three prices, Nasdaq, S1, S2, almost R1, and then back to S2. So anytime you open up a computer in the morning, just see where the price is, and then you decide at this price I will sell and buy. So just like you want to go to a place and buy something, you now know inside information, this is a sale price. So this is inside information, meaning that we predict. And then you're like, all right, price is sitting at $20,101. Actually, today it opened at 140. So when I came, I looked at Nasdaq price. Price was trading at 20,140. What were our first thoughts? Stay in short because base is down, pressure is down, right? So our mind says when the price goes to 250, sell. When the price goes to 20,050, buy. So these were the two zones, R1 and S2. So just to be honest, you don't have to look at any charts. You don't have to do anything. If you get good at it, you can do this from a phone. You're like, all right, this is my price. I get a match. So problem happens when it's not coming to you and then you're like, I think it's going to go down from here. Or I think it's going to go up from here. That I think will destroy your account. Right? So that's where every morning for last 15 years, when I joined Daniel 3.5 years ago, I thought he was playing a recording. Guys, put your stop loss on. Every day is your first day. Don't think what you see. And even now, it's the same one sentence. It's your day one, and then majority of us make money, then give it back. And then because of lack of discipline, nothing to do with charts, he made 3 trades, all successful. It's just we're building his confidence in the area. Because your fear is, what if the price doesn't stop there? That's your fear, right? That's the natural fear. So start small. So we asked them, all right, 28 is coming, let's buy. Together, we called out. So because in our head, if it goes back down a little, we'll do an average to get him out of a trade. You just let it fall more and then buy another one. So one trade buy. Let's say you bought it at 50, right? 20,000, and market fell down more. You would go into negative, right? So let it fall to, let's say, 20,000, for example. And then you can't have a stop loss if you're thinking of averaging. Yes, you can. You can take another trade on top of the trade. Yes, but not in the opposite direction. So 20,050 you bought. Price fell down to 20,000. You bought one more. Your price became 25. All it has to travel is half, and then you're done. Right? So that's an averaging. That's called dollar cost average. I'll explain shortly. One second. Let me. You're allowed to trade multiple lots, and the word is called dollar cost average. So your S1 is sitting at 20,100. That's the number. That's the number for Nasdaq. And you decided to go long here, meaning buy. What happens if the price is going down more? Your P&L is minus, right? Minus. So generally, you wait for the next area, and you say, all right, next number is 20,050. So I will buy one here, buy. And then I will buy one here as well. So now you have 2 lots. So what is the price? 20,025. And that's where you exit. You gotta exit here. You can't because that would be your retrace. If this was a swing, this will become a retrace, and then maybe it goes down from here, 25. But you gotta, if you do an average, you're not looking for profit. You're looking for exiting a trade at a break even. Because without loss. So swing, maybe a retrace, more go down.
So this is what I do as an experienced futures trader. I would do this and I got out. I would then sell one lot here. Exactly at this position, right? So I have two chances. It can still go up. So I got out. Instantly I got out. But I think market is going up. So I would enter here because now I only have one trade. And then if it goes down to, let's say now I am at 25. So I won't average at 50. I'll average maybe at 19,980, something like that, right? So many guys, that's why brokers hate averaging, because they don't make any money with you losing. Apex hated it, but they brought it back. So bought here because this was profit. You were thinking price would go up and you made profit. But if you didn't, you cannot do quickly another buy. No, you gotta wait for the next area, and you're like, all right, now I'm going to buy another one. That will put me in between this number. So you stop, you close it when the So the moment I'm back to zero, because now I have two lots, I back to zero, I still buy one more at this price. So I bought one more because now I will try to do an average. If it goes up, I will make money. But now I've given back two and I'm back in the trade, not at 100, at in between, right? So it's 75, not 25. So that's called an averaging, a dollar cost average. So if you get stuck in a trade, you can always do an average to get out of, but average has to be done far, not near. That's it. Every day, same routine. Come in, turn on 2 monitors, 2 cameras, watch for the areas, start shouting numbers, and done. And people, when they join the day one, they have an expectation. I don't know what I'm going to teach. I don't expected high, expected low, mid band. So 3 or 4 type per trade, but really area would be enough for all of it. हाँ जी, एनी दस्ते दें. नहीं, ट्रायल में नहीं देते वो मेटा देंगे आपको. तो नीचे गए हैं 14 डे मेटा 4 या 5 ले लें. नहीं, आप तो खुद कर सकती हैं. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. क्लिक ऑन 14 डे ट्रायल. उसको समझा दिया मैंने, ले लिया. हाँ, हो गया, बन गया, बस डन हो गया. तो डाउनलोड कर लेना मेटा एफएम. सॉरी, मेटा 5 ले लिया. मेटा 5 भी ठीक है, 4 भी ठीक, जो आपको इजी लगे. DX नहीं देंगे फ्री में, दे रहे हैं. दे रहे हैं.